Whether you realize it or not, you're probably using AI in your daily life. Typically, AI focuses on analyzing data to be used for things like translations or predictions. But there's another type of AI that you might have learned of recently called generative AI. Generative AI uses algorithms to analyze existing data, such as text and images, to then make new content. Now you can use AI to create entirely new images with DALL-E in Bing Image Creator, or generate code suggestions with GitHub Copilot. But AI is getting put to work outside of work by helping you draft things like a dinner party invite or an itinerary for a 4-day trip to Mexico City. To get technical, this all happens because large neural networks that work together like neurons to pass along information have been trained to analyze and recognize patterns within data. So let's try it. I, a person who entirely lacks musical talent, asked Bing Chat to help draft lyrics about this topic. It searched for information on generative AI and on pop songs and created this. Generative AI can make anything, from text to images to sound. It learns from data and patterns, and then it makes something new and profound. Okay, I'm back. Aside from catchy tunes, what can generative AI help you achieve? Imagine more with Microsoft AI. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? प्लीज़ मुझे ज़रा गाइड कर दीजिएगा, अपने फीडबैक से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं सेशन को आगे स्टार्ट कर सकूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हाजिक। और यहाँ पे मैं जो है वो इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कराची आई के बारे में, ताकि वो लोग जिन्होंने पहली दफ़ा कम्युनिटी को देखा या ज्वाइन किया है उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कम्युनिटी के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद, और मैं विद इन 2 मिनट्स जो है वो इस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हुए फिर जो है मैं सेशन की तरफ आ जाऊँगा। सेशन के अंदर कुछ जो है वो इंस्पिरेशंस हम देखेंगे और फिर जो उनके स्पेशलाइज स्पीकर्स हैं उनको हम हैंड ओवर करेंगे ताकि वो डेमो या मास्टर क्लास दे सकें। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कराची आई के इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम नीसम रहमानी है और मैं फाउंडर हूँ Karachi.ai का, और पिछले 5 साल से हम लोग कराची आई की कम्युनिटी चला रहे हैं जो कि अप्लाइड एआई की कम्युनिटी है। हमारी कम्युनिटी के 3 मेन पिलर्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, दैट इज अवेयरनेस, इंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। ये हमारी कुछ टीम का तारुफ है जिससे मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा, आप इसे हमारी वेबसाइट पर भी जाके पढ़ सकते हैं। अवेयरनेस के अंदर हम जो है वो क्वार्टरली मीटअप्स करवाते हैं। क्वार्टरली मीटअप्स का मकसद ऐसे स्पीकर्स को बुलाना जो कि अपने जो फील्ड है उसमें महारत रखते हो और ख़ास तौर पे उन्होंने एआई के हवाले से काम किया हो। जैसे कि हमने बहुत सारे मीटअप्स करवाए हैं, एआई इन ई कॉमर्स, एआई इन फाइनेंस, एआई इन मार्केटिंग, एआई इन सप्लाई चेन या एआई इन हेल्थ केयर एज वेल। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे आखान यूनिवर्सिटी की तस्वीर है और राइट साइड पे स्टार्टअप्स में एनआईसी की तस्वीर है। सो हमारा बहुत डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड रहा है मीटअप्स और इवेंट्स के हवाले से। इन मीटअप्स में होता क्या है कि 30 मिनट्स की टॉक्स होती हैं, डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं, एआई क्लिनिक होता है, मतलब उनकी टॉक के बाद पीपल आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस, एंड अगेन क्वार्टरली नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स होती हैं। सो अवेयरनेस के पार्ट में मैं आप सबको वेलकम करूंगा कि हमारा नेक्स्ट क्वार्टरली मीटअप जो है वो मई के अंदर स्केड्यूल है। इंशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है तो वहाँ पे हम जो है वो ऑन साइट ये मीटअप करेंगे, लेकिन स्टे ट्यून्ड और आप हमें जो है वो ज़रूर इस नेटवर्किंग इवेंट में ऑन साइट ज्वाइन कीजिएगा। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नीचे लिस्टेड है जिनके साथ हमने काम किया है और जिनके यहाँ पे हमने जो है वो वेन्यूज़ पे इवेंट्स को होस्ट किया है। कुछ स्टार्टअप्स जो हमारे साथ फीचर हुए हैं, ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं हमारे मीटअप्स की जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट कम्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी इज़ द एंगेजमेंट, जहाँ पे हमारे पास Karachi.ai.com/free के ऊपर ऑनलाइन फ्री coursera का करिकुलम है जहाँ पे आप अप्लाइड एआई और एमएल और डेटा साइंस सीख सकते हैं। बिगनर लेवल से मास्टरी तक जा सकते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें Karachi.ai.com/free, आपको एक coursera का करिकुलम मिल जाएगा फ्री। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर कोर्सेज एंड ऑब्वियसली आपको जो है वो उसमें वहाँ पे बताया गया है किस तरीके से जो है वो आप कोर्सेज को फ्री में कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट इज द फेसबुक ग्रुप, जिससे आप होपफुली ज्वाइन अप होंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक हमारा फेसबुक का ग्रुप तो facebook.com/group/Karachi.ai,
इज आवर ग्रुप, और इसके अंदर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक माइंडेड लोग हैं, यहाँ पे सवालात पूछ सकते हैं। अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं AI/ML डेटा साइंस के हवाले से, या आप डेवलपर हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कमेंट करके और जो है वो अपना काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। अनदर थिंग इज द यूट्यूब चैनल, जो कि जिसकी कड़ी आज का इवेंट भी है। हमने पिछले 5 सालों में बड़ी कोशिश की है कि AI का कंटेंट उर्दू के अंदर अवेलेबल नहीं था, तो हमने 5 सालों के अंदर जो है वो तकरीबन 400+ आवर्स का कंटेंट उर्दू के अंदर क्रिएट कर दिया है AI/ML डेटा साइंस में, जिसमें हमारी ट्रेनिंग्स भी रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे स्किल्स भी हमने सिखाए हैं। इसके अलावा हमारे तमाम मीटअप्स को हमने स्पीकर बाय स्पीकर, चंक बाय चंक अपलोड कर दिया है। सो अगर आप अप्लाइड AI के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं, KarachiDOTAI.com। तो कराची DOTAI हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जो है वो आने वाली तमाम इंफॉर्मेशनल और एंगेजमेंट वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। नेक्स्ट वी हैव इज आवर प्रोफेशनल ट्रैक। सो अगर आप कराची के हैं और ऑन साइट पढ़ना चाहते हैं अप्लाइड AI के बारे में, तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप कम्युनिटी मेंबर बन गए, लेफ्ट साइड से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं तो आप सर्टिफाइड डेटाबेस एक्सपर्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे इनटू डेटा साइंस, और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, यू हैव अदर एवेन्यूज सच एज डेटा इंजीनियरिंग एज वेल। इन कोर्सेज के बारे में आप जो है वो डिटेल मालूमात हमारी KarachiDOTAI.com/educations पे ले सकते हैं, और अगर चाहें तो हमारे मई के अंदर एनरोलमेंट्स हैं, आप उसके अंदर जो है वो एडमिशन भी ले सकते हैं। द थर्ड एंड लास्ट फॉरमोस्ट पार्ट इज द एम्पावरमेंट पार्ट। इस वॉट के हमें बहुत सारी कम्युनिटीज ने सपोर्ट किया, एंड वी आल्सो सपोर्ट अदर कम्युनिटीज, ताकि वो नर्चर करें और ये कल्चर आगे इसी तरीके से चलता रहे। वन ऑफ द की थिंग्स व्हाट वी हैव डन इज KarachiDOTAI.com/careers। So if you are struggling to find the ecosystem of data science and ML here in especially in Karachi, so हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसके ऊपर तमाम जॉब्स पोस्ट होती हैं AI/ML डेटा साइंस की, जो कि लिंक्डइन और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हंट होके यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो रही है। सो ऑलवेज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रोल इन डेटा साइंस एनालिटिक्स, जस्ट गो टू KarachiDOTAI.com/careers एंड अप्लाई टू योर फेवरेट रोल एंड जॉब्स। तो आपको जो है वो वहाँ पे अंदाजा होगा कि क्या डेटा साइंस ML की इंपॉर्टेंस है और आगे किस तरीके से इसकी जॉब्स आ रही है। These are some of the companies that work with us. Obviously हमारी certifications को वो endorse भी करते हैं और हमारे graduates को hire भी करते हैं। These are some of the universities that we have worked into, and उनके साथ collaborations हमारी चल रही हैं। Some of the communities that we are very very thankful, including the Soul Brothers Pakistan, जिन्होंने आज भी हमारे इवेंट में कोलैबोरेट किया है और पिछले इवेंट में भी हमारे साथ कोलैबोरेट किया, और हमेशा इस तरह की एकेडमिक एक्टिविटीज़ को एनकरेज करते हैं। This is one of the profound impact that we as a Karachi culture, and also as a Pakistani, we can rejoice in the world that we have created this impact on a global level. So let's rejoice this community. आपका सपोर्ट दरकार है, ज़रूर हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें और इसका पार्ट बने, खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी ये मैसेज पहुंचाएं ताकि वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकें। These are the credentials if you are new into the community, and stay tuned, and looking forward to the very good session with Karachi.ai. मुझे प्लीज़ ज़रा फीडबैक दे दीजिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन और मेरी आवाज़ नज़र सुनने में आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ सुनने में आ रही है। All right, thank you so much, Fahad, for the feedback. All right, so आपने इस Whether you वीडियो से realize it or आगाज़ not, किया है। you're probably using AI in your daily life. Typically, AI focuses on analyzing data to be used for things like translations or predictions. But there's another type of AI that you might have learned of recently called generative AI. Generative AI uses algorithms to analyze existing data, such as text and images, to then make new content. Now you can use AI to create entirely new images with DALL-E in Bing Image Creator, or generate code suggestions with GitHub Copilot. But AI is getting put to work outside of work by helping you draft things like a dinner party invite or an itinerary for a 4-day trip to Mexico City. To get technical, this all happens because large neural networks that work together like neurons to pass along information have been trained to analyze and recognize patterns within data. So let's try it. I, a person who entirely lacks musical talent, asked Bing Chat to help draft lyrics about this topic. It searched for information on generative AI and on pop songs and created this. Generative AI can make anything, from text to images to sound. It learns from data and patterns, and then it makes something new and profound. Okay, I'm back.
Aside from catchy tunes, what can generative AI help you achieve? Imagine more with Microsoft AI. यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना वीडियो को स्लो डाउन कर रहा हूँ ताकि जो है वो स्क्रीन
Creating fun, beautiful, original images is as easy as typing a few words. Introducing Image Creator. Now you can express your ideas in seconds. Simply type the words you want as images. Then let Bing and AI do the rest. You'll be amazed at what you create and what you create next. It's super fun. Just type a phrase, then iterate. As you change your description from a skateboard to a unicorn to, I don't know, a banana, the image updates to follow your direction. You can also play with styles like classical painting, digital illustration, pixel art, hand-drawn, and so many more. So go experiment and inspire others to do the same. Image Creator, beautiful images in just a few words. हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले मैं ये जानना चाहूँगा। मिसम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई गेस आ रही है। जी अस्सलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही ओके। है? हाँ जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है और मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही जी है आपको? बिल्कुल। इससे पहले मेरी आवाज़ आ रही थी, मुझे रियलाइज़ ही हाँ, हुआ कि मेरी आवाज़ आ रही थी नहीं, मुझे। आपकी काफ़ी स्लाइड्स में जहाँ आपने इमेज का शुरू किया, अपनी कैमरा स्टॉप किया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ़ ओह 1-2 हो! वीडियोज़ में अच्छा। फिर लास्ट में आवाज़ आई आपकी। हाँ जी। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। हाँ, चलें, नो इश्यूज़। आप हाँ, अपनी लेकिन स्क्रीन हम लोग शेयर कर लें स्लाइड तो आप देखते अपनी सेशन। हैं। 1 मिनट, मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये प्रेज़ेंट से हो गया आई गेस। शेयर स्क्रीन। हाँ जी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? बस एक दफ़ा कंफ़र्म कर दें, मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को?
there is some issue with the audio. Let me check with the sound. It's 10 o'clock. Hello, check 1 2 3, check 1 2 3. ओके ओके फाइन। चलें अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ आई गेस। चलें ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। ओके आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा, काफ़ी अच्छी स्लाइड्स मीसम ने हमें दिखाई, काफ़ी डिटेल्ड और ब्रीफ थी, जिसमें हमें आइडिया हो गया कि हमारी जो जनरेशन वाइज जो इमेज उसमें बिल्डिंग हो रही है, अब पहले एक चीज़ ज़ीरो पे थी, लेकिन 2020 में इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस कराया स्टेबल डिफ्यूजन। लोगों की रिप्लेसमेंट होना शुरू हो गई, फोटोग्राफी की रिप्लेसमेंट शुरू हो गई, इमेजेस की रिप्लेसमेंट शुरू हो गई, जो स्टॉक इमेजेस वगैरह थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये आगे जाके एप्लीकेशन यूआई यूएक्स और बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेसमेंट कर रही है। रिप्लेसमेंट एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, यू कैन से हमें आइडियाज़ दे रही हैं या एक न्यू आइडियाज़ लेकर आ रही है, जनरेट कर रही हैं। कंप्यूटर बेस्ड मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर इंसान इन्वॉल्व नहीं है, एक कंप्यूटर इन्वॉल्व है, तो हमें उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और कंप्यूटर हमसे भी काफ़ी कुछ सीख रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है इसके पीछे। तो मेरा जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जो हम एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं, जो हम यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हैं, उसको किस तरह हमने उसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, ठीक है। तो हम जाएंगे सबसे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा अपना वर्क दिखा दूँ। एक ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लगाया, तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक कुतुब मीनार का उसके ऊपर रेंडरिंग की थी, और इसके ऊपर ये हड़प्पा है जो पाकिस्तान में है, पंजाब में है, पंजाब साइड पे है हड़प्पा, उसकी रिक्रिएशन की हुई है। फिर टेक्सला साइड पे स्तूपाज हैं जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उसकी रिक्रिएशन, आर्किटेक्चरल रिक्रिएशन की गई है। तो सबसे पहली जो चीज़ है इमेज क्रिएशन की जब बात आती है, हमारे पास अभी वी नो के ये टूल आ चुका है जिसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ वन क्वेश्चन, आप इन साइट पे जाके सबसे पहले करेंगे क्या? मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ तो होगी, देयर इज़ सम एनी आइडिया और मे बी कोई कॉन्सेप्ट, मे बी देयर इज़ एनी प्रोजेक्ट, कोई क्लाइंट आपको कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, जिसके हवाले से रिलेटेड आपको काम करना है, ठीक है। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जाके ये ऐसा नहीं है कि आप उधर गए और फन के लिए कुछ भी टाइप किया और बनाते गए। इट्स ये कोई मतलब खेलने वाली चीज़ नहीं है। तो आप इसको बड़ा पॉजिटिवली, बड़ा अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, ठीक है, कोई इमेजिनेशन है, बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो समटाइम्स आप एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है फ़ोटोशॉप की, एडोब इलस्ट्रेटर की, तो आप खुद एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा आपकी स्किल्स कमज़ोर हैं इसमें फ़ोटोशॉप में, एडोब में, लेकिन यू वांट दैट थिंग कि ये आइडिया आपको बनाना है, एग्ज़ीक्यूट करना है हर हाल में और किसी को प्रेज़ेंट करना है, तो दिस कैन हेल्प यू, ठीक है। जो आप इमेज क्रिएशन, इस इमेज प्रॉम्प्टिंग से आपका ये काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ साबित हो सकती है। तो आपके पास अगर कोई आइडिया है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, चाहे वेब डिज़ाइनर हैं, या कोई भी आप फील्ड से, अगर आपके पास आइडिया है, इमेजिनेशन है, दिस थिंग इज़ फॉर यू। अगर अगर आप ये सारे प्रोफेशन में, लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, तो ये सब आपके लिए टोटली वेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले ही मैं ये इसकी वेरी वेरी बेसिक जो है ना वो चीज़ है, आइडिया और इमेजिनेशन, क्योंकि इसके बेस पे ही आपको आगे उसके ऊपर काम करना है, ठीक हो गया। अच्छा, जो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ यार कि न्यूयॉर्क सिटी है, वो एक जार में मुझे बंद करनी है, कैसी लगेगी? या मॉस्को सिटी है, इसका कोई लैंडमार्क है, ये सेंट बेसिल कैथेड्रल है, तो वो जार में कैसा लगेगा? ठीक है, बेसिकली ये मेरे पास आइडियाज़ आ गई। तो अब इस आइडिया को मुझे एग्जीक्यूट करना है, मैं इसको देखना चाहता हूँ, और आई कैन डू दिस इन फोटोशॉप, पर अभी हमारे पास एआई टेक्निक्स हैं, और इसके बेस पे मैं ये काम जो जो कि मैं 2 घंटे लगा के कर सकता हूँ, वो 2 मिनट में भी हो सकता है, 3 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है ना? इट्स मतलब ये आपकी ज़िंदगी इतनी आसान कर देगा ये चीज़। तो ये मेरा आइडिया बेसिकली एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है? आपके पास अब 1100 आइडियाज़ होंगे,
और हो सकता है मेरे आइडिया को देख के आप इंस्पायर हो और उसको उससे रिलेटेड कोई आइडियाज जनरेट करें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो ये आपको सामने 2 आइडियाज़ हैं और इसको मुझे एग्ज़ीक्यूट करके बनाना है इस तरह कुछ, ठीक है? ये मैंने अभी इसका एग्ज़ीक्यूशन इसकी इस तरह की और मुझे इसका रिज़ल्ट इस तरह मिल चुका था, ठीक है? तो मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने सोचा उसका मुझे इस तरह का रिज़ल्ट मिल गया और आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस। मतलब जैसा मैं चाह रहा था, उससे थोड़ा-सा इन्होंने अच्छा ही एआई ने मुझे बना के वो चीज़ दी, इमेज क्रिएशन हुई। तो आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड अबाउट दिस। बीइंग एन आर्टिस्ट, दिस इज़ व्हाट आई वांट। हाँ, अगर कुछ चीज़ें मैं इसमें से नहीं चाह रहा था, तो मैं मज़ीद इसको रिफ़ाइन कर सकता हूँ, वर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो ये अब टोटली अप टू मी है। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो ये टेक्नीक्स अब मैं आपके साथ कुछ इस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? इमेज प्रॉम्प्ट्स आपने किस तरह करनी है। अब इमेज प्रॉम्प्ट्स के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है पता है क्या है? वो ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रामेटिकल वो चीज़ सेंटेंस करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो चीज़ एक सेंटेंस सही उसमें अपना जो इमेजिनेशन जो थॉट है आपकी, वो अगर आप उसको सही तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, तो आप उसको बड़े आसानी से ये आपको रीड कर सकता है, ये मॉडल आपको रीड करके वो जनरेट करके दे सकता है। आई डोंट नो कि हम इसको उर्दू में बोलेंगे उस तरह जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तो मेरा ख़्याल से अभी उर्दू और दूसरी लैंग्वेजेज़ पे थोड़ा-सा मुश्किल होगी इसको। मेबी स्पेनिश वगैरह, क्योंकि स्पेनिश काफ़ी जगह बोली जाती है, स्पेनियोल और इटालियन वगैरह ये लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं। हो सकता है उस पे हो सकता है लोगों ने काम किया और उस पे इमेज क्रिएशंस हो रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल उर्दू वगैरह अगर आप उर्दू पे टाइप करेंगे कि मुझे लाहौर सिटी जो है एक मग और जार के अंदर दिखा रहे हैं, तो शायद वो ना करे। तो बेसिक चीज़ जो है लैंग्वेज है और उसकी जो ग्रामेटिकल है आपको सही प्रोनाउंस करना है और समहाउ 4 वर्ड्स का आवश्यक 5 वर्ड का नो मैटर्स और स्पेलिंग की करेक्शन आपको होनी चाहिए लाज़मी। समटाइम्स एआई वैसे काफ़ी स्मार्ट है, अगर आप स्पेल भी एरर हो लेकिन वो लोग कैच कर लेता है समहाउ काफ़ी सिमिलैरिटीज़ के साथ। बट अगर स्पेलिंग करेक्शन जो है आपकी सही है, स्पेल्स ठीक हैं, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा, इमेज प्रॉम्प्ट करने की कुछ समझ लें एक एटिकेट्स हैं, एक स्टेप्स हैं, वो आपने उसमें वो वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है? अभी जैसे मैंने ये न्यूयॉर्क सिटी इन जार जो है, उसमें ऑब्जेक्ट का मुझे उसको डिफाइन करना है कि मुझे ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, उसका सब्जेक्ट क्या चाहिए, उसकी फोरग्राउंड में क्या चाहिए, उसके बैकग्राउंड में क्या चाहिए, उसकी लाइटिंग कैसी हो और उसका जो कैमरा एंगल है वो कैसा हो और इस तरह की छोटी-छोटी डिटेल्स उसमें दरख्त होने चाहिए या उसमें कोई बर्ड होनी चाहिए, उसमें फिश होनी चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ें, ये प्रॉप्स वगैरह, ये मुझे उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। जो भी मुझे इमेजिनेशन में आ रहा है वो मुझे उसको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो ऐसा भी होगा रिज़ल्ट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड ऑन कर दे कंप्यूटर जो कि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है ना? जो हम बिल्कुल चाह ही नहीं रहे या समटाइम्स आपको रिज़ल्ट बिल्कुल ऑपोज़िट मिल सकता है। तो उससे बचने के लिए, उससे उसको किल करने के लिए, उसको नल करने के लिए देयर इज़ कॉल्ड नेगेटिव प्रॉम्प्ट, ठीक है ना? और ये काफ़ी एआई जो टूल्स हैं उसमें अवेलेबल होता है कि आप वो जो वर्ड्स हैं, वो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है उस इमेजेस में, तो वो आप उसको नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स में डाल सकते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें रिज़ल्ट में वो नहीं आपको शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बर्ड्स नहीं चाहिए या फिश नहीं चाहिए अपने उस इमेज में या कोई ऐसी स्पेसिफिक बिल्डिंग है वो नहीं चाहिए, तो आप वो उसमें मेंशन कर सकते हैं तो वो उसमें माइनस कर देगा, ठीक है? बड़ा ये सिंपल सा इमेज प्रॉम्प्ट हम जो बेसिकली हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है और जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट है प्रॉम्प्ट्स हैं वो जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना? तो हम बड़ा क्लियरली इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तो लेट्स मूव ऑन डायरेक्टली टू दिस। अच्छा, इस तरह के आपने देखा होगा अभी मिशन ने अपनी स्लाइड्स में दिखाया काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली ये अभी जो मैं ब्लू विलो के नाम से एक वो है वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं पर्सनली लियोनार्डो डॉट एआई यूज़ कर रहा था, मैंने पहले मिडजर्नी भी यूज़ किया, लियोनार्डो डॉट एआई भी यूज़ किया। तो अच्छा, इसमें मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका स्टाइल ये होता है कि आप इसको पहले इमेजिन लिखते हो, इमेजिन, ठीक है? और वो आगे प्रॉम्प्ट खुद ही आ जाता है, ठीक है? इमेजिन, प्रॉम्प्ट, यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा कि मुझे चाहिए क्या? तो अगर मैं लिखूँगा न्यूयॉर्क सिटी इन जार और फिलहाल अभी मैं इसको यही करके इसको
कॉमा लेके अगर मैं कह दूँ वाइट बैकग्राउंड, थोड़ा सा डिटेल दे दूँ इसको मज़ीद, ताकि इसको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कॉमा वाइट बैकग्राउंड, हाईली डिटेल्ड हो, ठीक है, मुझे काफ़ी डिटेल चाहिए, या हाई रेजोल्यूशन भी मैं कॉमा के साथ में अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन कर सकता हूँ, ऐड ऑन कर सकता हूँ। हाई रेजोल्यूशन हो, और इसके अलावा जो है मुझे उसमें जो है आप कह सकते हैं 3D मॉडल हो, इस तरह की चीज़ें वर्डिंग मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये मेरी अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है ना? तो अभी मैं देखूँगा रिजल्ट कैसा आता है। मैंने इसको डन कर दिया। ये यहाँ पर लिखा हुआ है create prompt, we are working on it, stay tuned for fun images, right? ये हमारा prompt आगे फॉरवर्ड हो चुका है। अब ये जो इसको जो मॉडल है हमें कन्वर्ट करके देगा। असम प्लीज थोड़ा सा जूम कर देंगे, कंट्रोल प्लस दबा के। ये 1 मिनट, पहले मैं वो देख लूँ कहाँ पर उसने जनरेट किया। हाँ, यस, ये इसने रिजल्ट हमें निकाल के दिया। जो अभी मैंने प्रॉम्प्ट डाली है, ये इसने रिजल्ट बेसिकली बना के दिए, ठीक है। अब इट्स अप टू मी कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए या आप इसको दोबारा भी रेंडर कर सकते हैं, बट समहाउ इट्स नियर टू व्हाट आई एम थिंकिंग, ठीक है। तो आप इसमें अब फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, या डिफाइन कर सकते हैं, मजीद कुछ डिफाइन करेंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट दे देगा। तो मैं एक और ट्राई करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन के साथ। स्लैश इमेजिन स्पेस, स्पेस दबाऊंगा तो वो प्रॉम्प्ट खुद ही आ जाएगा, अपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखता हूँ मॉस्को सिटी इन अ जार, और देखता हूँ क्या इसमें कर सकते हैं मैं, हाईली डिटेल्ड प्रोफेशनल फोटोग्राफी। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, वो अगर हम मेंशन कर देंगे तो वो मॉडल जो है आसानी से समझ सकेगा कि हमें एक बड़ी अच्छी एक रेजोल्यूशन में पिक्चर चाहिए जो कि हाईली प्रोफेशनल फोटोग्राफी वाली हो, कोई भी ऑयल पेंटिंग टाइप ना हो। अगर हाँ, अगर मैं लिखूंगा ऑयल पेंटेड या ऐसे कुछ, तो मुझे ऑयल पेंटिंग टाइप ही वो प्रेजेंट करेगा। एक मिनट, पहले मैं इसको फुल नीचे ले लूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी यूजर्स जो ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं अपने आइडियाज़ वगैरह। हाईली डिटेल्ड और हाई रेजोल्यूशन with white background. Enter. Wait prompt. We are working on it. Stay tuned for fun images. अब देखेंगे इसको लोड करके। मतलब इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसमें कोई भी वो नहीं है परेशान होने वाली चीज़ कि यार ये कैसे होती है चीज़, तो यहाँ इसमें क्या डिफिकल्टी। इट्स टोटली आपकी वर्डिंग जो है ना वो लिटरल होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो मशीन आपको देख के इजीली लर्न कर सके। पर जब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं आप उससे भी लर्न कर सकते हैं कि अच्छा मैंने कहाँ गलती की, और मैं ये देखें अब इसने ये मुझे करके दिया है एक्सट्रैक्ट। तो ठीक है, फर्स्ट वो जार से नहीं मिलती जुलती, सेकंड वाली उसने मिसगाइडेड किया, मे बी ये जार लेटा हुआ है या उसने जार के बॉटम से नहीं दिखा दिया है। लेकिन यहाँ पर अच्छा उसने मुझे ऐड कर दिया, एक हाथ ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल ये हाथ आ रहा है, इसको मैं नेगेटिव फॉन्ट में डालूंगा तो वो हाथ गाइड कर देगा इस तरह कुछ। लेकिन ये कितनी परफेक्ट होगा, उसने अच्छी बना के दी है। तो मैं सोचता हूँ यार ये जो मैं सोच रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था, या मैंने मेरा जो कॉन्सेप्ट था ये इसके ऊपर पूरी उतरी, तो मैं ये एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो और अच्छा मज़ीद आप इसमें फर्दर कुछ काम करना चाहते हैं तो फिर ये कि आप फ़ोटोशॉप के थ्रू भी इसमें ऐड ऑन वगैरह कर सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, और इसमें कोई भी इतनी बड़ी वो नहीं है जो डिफ़िकल्टी वाली चीज़, ठीक है ना। ये सिंपल प्रॉम्प्टिंग है, इसमें कोई मैंने ज़्यादा वर्डिंग्स भी नहीं ऐड की। बहुत सिंपल वन लाइन प्रॉम्प्ट है और आपको आपका रिजल्ट मतलब का मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आप मज़ीद प्ले कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। वर्डिंग्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करके मज़ीद प्ले कर सकते हैं। इसके आर्किटेक्चर वाइज भी कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा आर्किटेक्चर चाहिए, वैसा आर्किटेक्चर चाहिए। लेकिन मेरी तो रिक्वायरमेंट ही बिल्कुल बेसिक सी और स्ट्रेट थी कि मुझे मॉस्को की जो है बिल्डिंग वो उसमें चाहिए थी जार के अंदर, दैट्स इट।
लेकिन अगर मैं इसको कह देता कुछ और भी के ट्रीज भी होते, बर्ड्स भी होती, तो उसमें मुझे वो चीज़ें भी ऐड करके दिखा देता। ठीक है, तो इस तरह आप देखें काफ़ी लोगों ने अपने अपने प्रॉम्प्ट्स की हुई हैं। ये एक बंदे ने किया, कॉन्सेप्ट आर्ट ऑफ अ मैग्निफिकेंट डार्क नियॉन फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक, तो उसने उस तरह की जनरेशन करके दे दी है। तो इट्स वेरी इजी, बस ये इसके लिए ज़रूरी है। और फॉर एग्जांपल ये किसी का कॉन्सेप्ट है, किसी का आइडिया है, किसी का इमेजिनेशन है, तो इसी तरह आपके भी दिमाग में कोई आइडिया होना चाहिए, कोई इमेजिनेशन होनी चाहिए, तभी आप इससे बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप जैसे साइन इन किया और आज यार मैं इसकी कोई जनरेशन करता हूँ और मैं बस टाइप करना शुरू हो गया, मतलब हवा में तीर चलाने वाली चीज़ नहीं है ये। ये एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद टूल है, जो कि आप प्रोफेशनली और एज़ अ हॉबी बेस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और प्लेटफ़ॉर्म हम यूज़ करते हैं, ये तो मैं डिकोड में यूज़ कर रहा हूँ ब्लू विलो के नाम से। तो ये है बेसिकली प्लेग्राउंड एआई, ठीक है? तो इसमें भी हम सेम चीज़ वैसे ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट निकलता है। और द थिंग इज़ मार्केट में इतने सारे आ गए हुए हैं एआई प्लेटफ़ॉर्म्स इमेज जनरेशन वाले, कि यू हैव टू डिसाइड कि उसमें से रिज़ल्ट किसका अच्छा निकलता है, ठीक है ना? डेफ़िनिटली पीछे सारे डेवलपर जिसके काम कर रहे हैं वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा रिज़ल्ट निकाल के दे सकें। तो ये आपको डिसाइड करना है जहाँ पर आपका रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, समझ में दैट वन इज़ परफेक्ट फॉर यू। न्यूयॉर्क सिटी इन अ जार। अभी सिंपल इसको सिंपल लिख के देखते हैं वो क्या वो देता है। और यहाँ पर नेगेटिव एक्सक्लूडेड फ्रॉम इमेज लिखा है, बेसिकली ये होती है नेगेटिव प्रॉम्प्ट जो जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया वाटर मार्क्स वाली मुझे इमेजेस नहीं चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है वो स्टॉक इमेजेस वगैरह में से कोई इमेजेस पकड़ता है कंप्यूटर और वो भी आपको शो करना शुरू कर देता है। अच्छा, जनरेट का मैंने बटन दबाया तो देखते हैं वो मुझे क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में बना के देता है। मतलब ब्लू विलो वाज वेरी गुड। अस्साम अच्छा, प्लीज जूम कर दीजिएगा। श्योर श्योर। अच्छा, ये अब मैंने प्लेग्राउंड डॉट एआई में बनाई है, तो इसमें जो है इसने मुझे ये रिज़ल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में बना के दिया है। तो इसमें मैं अभी मतलब इतना खुश नहीं हुआ कि यार इसने वो चीज़ जैसा रिज़ल्ट नहीं दिया। एक तो डुप्लीकेट जार्स बना दिए, एक से ज़्यादा जार हैं और कोई सेंस नहीं बना रही। तो मैं थोड़ा वर्ड के साथ प्ले करके देखता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी इन अ जार, इन अ सिंगल जार, इन अ सिंगल जार। टेबल मेंशन कर देता हूँ कि वो टेबल पे पड़ा है। इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड मेंशन कर देता हूँ, हाई डिटेल्ड और प्रोफेशनल फोटोग्राफी, ठीक है। अब मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ सेम चीज़, तो देखते हैं वो रिज़ल्ट क्या निकालता है। ओह! अब इसमें तो मुझे लगता है अचार का वो अचार का मुरब्बा बना दिया है। देखिए, अब इससे ये चीज़ थोड़ी-सी है कि अब हर जो टूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेग्राउंड हो गया, इसी तरह ब्लूविल हो गया, मिडजर्नी हो गया, आप ये अब आपको डिसाइड करना है कि कौन-सा रिज़ल्ट्स आपके मुताबिक आपके मयार पे पूरा उतरता है। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे आपको अच्छा रिज़ल्ट्स देंगे, ठीक है? तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। अब मुझे समहाउ मैंने प्लेग्राउंड अब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, आज फर्स्ट डे है, तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट वो इतना अच्छा नहीं दे रहा। आप लेकिन फिर भी निकाल सकते हैं इससे रिज़ल्ट अपनी वर्डिंग्स के साथ प्ले करके, ठीक है? तो हो सकता है मैंने कुछ इसमें ज़्यादा वो चीज़ लिख दी हो या उसको वो चीज़ समझ ना आई हो। अगर इन अ सिंगल जार के मैं अगर जनरेट करके देखता हूँ, इसमें क्या कहता है? आप इसमें हालाँकि ये देखें, अब वो सिर्फ़ एक सेंटेंस से, एक वर्ड से कितना फ़र्क पड़ा है, आपने ये देखा होगा। मैंने ज़्यादा वो चीज़ नहीं की, लेकिन हाँ, समहाउ उसने वो चीज़ बना दी है। पर इसकी जनरेशन इज़ टोटली डिफरेंट, और जो मैंने उसमें ब्लू फ़िल्म में बनाया था डिफरेंट, इसी तरह अगर यही चीज़ मैं मिडजर्नी में बनाऊँ, वो मज़ीद मुझे प्रोफ़ेशनल, मज़ीद 3D, और क्योंकि इसके पीछे डेवलपर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं, लोग इसमें जनरेशंस बना रहे हैं न्यू-न्यू, तो ये इसके इनका फ़र्क है। तो ये आपको ट्राई करना है, आपको अभी फ़िलहाल जब तक ये चीज़ स्टेबल नहीं हो जाती, ठीक है? अभी समझना है, एक तरह से सारे ही अपनी-अपनी जगह बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट करने की कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा निकले। तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं लियोनार्डो डॉट एआई ट्राई कर सकते हैं, जो पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो अभी आज थोड़ा एरर सर्वर एरर चल रहा है, लेकिन हो सकता है कल तक ही रिज़ॉल्व हो जाए।
तो इसका रिजल्ट अच्छा है, मुझे मिड जर्नी का रिजल्ट अच्छा लगा है, और मुझे ये ब्लू विलो है उसका भी रिजल्ट अच्छा लगा है। आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई गेस दैट्स इट, और ये दिस इज एनफ फॉर यू। और आप लोग चाहें खुद ट्राई करें अपने आइडियाज, तो एक अच्छा आपको रिजल्ट आ सकता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू मिसम। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा और समझ आई हो। ठीक है मिसम, और ओवर टू यू। Thank you so much, Assam, थैंक यू for मिसम। joining and sharing your knowledge. और थैंक यू। I really apologize our audience कि मेरी जो है वो आवाज़ बीच में ग्लिच कर गई थी, बट वी अश्योर यू कि जब हम रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो उसके अंदर कट लगाकर आपको उसकी ऑडियो इंशाल्लाह सफिस कर देंगे। So again, thank you so much Assam for your own थैंक यू। session। और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से जो है वो हमारी एक नई बातें जा रही है। और आप सब ने जो है वो बहुत सारे नई चीज़ें देखी हैं जिसके अंदर बहुत सारी इमेज की टेक्निक्स होती हैं। मैं इंशाल्लाह जो है वो कोशिश ये करूँगा कि हमारे पास एक जो है वो कंप्लीट एक बुक है अवेलेबल, जिसके अंदर बाकायदा पूरा आपको समराइज़ किया जा रहा है कि आपने प्रॉम्प्ट के फॉर्मेट कैसे देने, मॉडिफायर्स कैसे यूज़ करने, आपने यहाँ पे फोटोग्राफी के स्टाइल्स कैसे देने। तो बहुत कुछ सीखने को है। मैं यहाँ पे एक काम ये करूँगा कि आप लोग को ये डेक जो है वो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग तसल्ली से पढ़ें इसको और समझिए कि कैसे जो है वो मिड जर्नी और डेली मॉडल्स के अंदर आप जो है वो क्रिएटिव प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं और वो ज़बरदस्त किस्म के इमेजेस बना सकते हैं जो कि आप शायद इंटरनेट पे देखते हैं और ये हसरत करते हो कि शायद इनको प्रॉम्प्ट बेहतर लिखना आता है और हमें नहीं आता, तो आप भी लिखना बेहतर सीख सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे ज़रा फीडबैक दे दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ भी आ रही है इस बार, तो मैं अश्योर करना चाहता हूँ ताकि फिर जो है वो हम सेशन को आगे बढ़ा सकें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक फ़हद। और अब दोबारा से हम आते हैं, अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और ये वो एरिया था जहाँ से हमने सारा ये छोड़ा था और ये इमेज जनरेशन का एरिया कहा था जो कि हम इंशाल्लाह दोबारा कवर कर लेंगे। अब मैं जिस नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ वो है वीडियो जनरेशन। इट्स समथिंग बियॉन्ड द इमेज जनरेशन, और लेकिन है उसी की सीक्वेंस में, उसी का एवोल्यूशन है। तो वीडियो जनरेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता हूँ। वर्चुअल कैरेक्टर्स, सिंथेटिक मीडिया जनरेशन और ये सारी जो चीज़ें जो नहीं आ रही हैं एआई के हवाले से। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी इनटू। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा वीडियो जनरेशन के बारे में समझते हैं कि वीडियो जनरेशन है क्या। सो आपने सबसे पहले ये देखा कि एआई जो है वो वर्चुअल इमेजेस और सिंथेटिक इमेजेस प्रोड्यूस कर रही है, जैसा कि आपने उसको प्रॉम्प्ट के अंदर डिस्क्राइब किया है कि मुझे इस तरह का इमेज चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास एआई जो है वो बहुत सारे मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए अब एक तो वीडियो जनरेशन है और एक चीज़ है कि वीडियो के ऑर्केस्ट्रेशन है। मतलब ये है कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स जो हैं उसके जो मॉडल्स हैं वो गैन्स जो हैं वो आपको इनेबल ये कर रहे हैं कि आप किसी एक तस्वीर को लेकर इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं कि वो वाकई में जैसे बोल रहा हो या बोल रही हो। आपने बहुत सारी ऐसी एआई बेस्ड वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर स्क्रिप्ट होती है और एक लेडी या बंदा खड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, लेकिन आपको मौजूद समझ में आ जाता है कि वो वर्चुअल कैरेक्टर है जो कि बोल रहा है। तो ये वो सारी पावर है जो कि एआई के थ्रू जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है और हम इसको एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ ऐसे टूल्स भी देखेंगे जिनके जरिए ये काम होता है। तो यहाँ पर मुझे ज़रा एक मिनट दोबारा से स्क्रीन रीशेयर करने दें। आई नीड टू अश्योर कि मेरे पास जो स्क्रीन शेयर हो रही है वो वॉइस के साथ हो रही हो। ऑलराइट, सो होपफुली मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी अब, और मैंने इसमें वॉइस इनेबल की भी है। सो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। जैसे मैंने जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स की बात करी तो वो भी डीप लर्निंग का एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसके ज़रिए जो है वो हम सिंथेटिक वीडियोस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है वो इनकी क्या इम्प्लीमेंटेशंस है, वर्चुअल असिस्टेंट्स या चैटबॉट्स जो कि नेचुरल साउंडिंग वॉइस के अंदर आपके साथ बात कर रहे होंगे या आपको ट्रेनिंग के हवाले से कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड अ ट्रेनिंग, तो आपने एक स्क्रिप्ट बना ली, आपने स्क्रिप्ट को जाकर प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला और उस स्क्रिप्ट के अगेंस्ट में आपको एक वर्चुअल कैरेक्टर मिल गया जो कि आपकी पूरी स्क्रिप्ट को रीड आउट करके जस्ट लाइक के जैसे वो बात कर रहा है वो आपको जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे यूज़ केसेस आपके मार्केटिंग के अंदर
और जो आपके सोशल मीडिया है वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन के हवाले से मालूम हो सकता है। इसके अलावा एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं वीडियो गेम्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस के अंदर, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। अनदर द डार्क साइड ऑफ इट इट्स द डीप फेक, बट अगेन डीप फेक का भी हमने रिसेंटली एक यूज केस देखा था इंडिया के अंदर, जहाँ पे ऑग्लिवियन मेथड के अंदर जो है वो कोलैबोरेट किया था डेयरी मिल्क के साथ, और उन्होंने इंडिया के एक ह्यूज आर्टिस्ट को उन्होंने ऑनबोर्ड लिया, उनकी फोटो शूट की, और उसके बाद उनके कंसेंट से उन्होंने उसका डीप फेक बनाया, और उन्होंने ये थीम लिया कि छोटे स्टोर जो है वो बड़े लोगों को हायर नहीं कर सकते अपनी प्रमोशन के लिए, सो दे कुड एक्चुअली दे डोनेटेड दोस 100 ऑफ कस्टमाइज्ड वीडियो फॉर दोस स्टोर्स, जो कि बड़े आर्टिस्ट ने कहा था। तो दिस एक्चुअली रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ फुटफॉल इनटू देयर स्टोर्स, छोटे लोगों के, और ऑब्वियसली वो छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्होंने जो है वो डीप फेक के जरिए जो है वो एक बड़े आर्टिस्ट को अफोर्ड किया, उनकी पर्सनलाइज जो है वो उनको रिकॉर्डिंग मिल गई उनके टेस्टिमोनियल के लिए। So this was one of the positive side of the deep fake that can be used in the advertising scenario, और also इसके अलावा मूवी और टीवी प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारा काम हो रहा है। कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रिडक्ट है आपके पास, इसके अलावा पीच है, सिंथीसिया है, जो कि इन सारी चीज़ों को इनेबल करें। तो आप ज़रूर जाकर इनको गूगल करें और आपको ये मालूम चलेगा कि इसके अंदर जो है वो ये प्लेटफॉर्म्स क्या क्या नई नई चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक डेमो दिखेगा सिंथीसिया का। Choose from a wide variety of fully customizable video templates. Then, select your preferred AI avatar. Now, type in text in over 120 languages. To begin, and choose a narration style. in over 120 languages. Next, start editing your Next, start editing your video. Each color to match your brand identity. Change and colors upload your logo that or you can other- reuse for future that you can videos. reuse for future videos. Alternatively, You can choose from a library of millions of royalty-free media assets such as videos, images, icons, and more. Add your you can text choose and images, position icons, everything and more. easily, thanks to the snapping function. And if you need, you can Sound also add a soundtrack. Record quick videos of your screen with a built-in screen recorder, so you don't have to jump in between apps. Trim and crop your recording and adapt it to your scene. Animate elements by dropping markers in your script. It's an easy, satisfying, and super quick way to make your video look more professional. it's an easy, When you're ready, satisfying, click and Generate super Video and include or exclude automatic closed captions. Video with your team to get feedback and add you're comments. ready. If you need to make changes, simply edit your video, adjust it, and generate a new one in minutes. Click Generate Video. Finally, when your video is ready, you can download it, share it, or embed it. And that, try it for yourself today. Ciao, ciao. ये जो आपने मॉडल देखी है, जो कि आपने नोटिस किया होगा, वर्चुअल मॉडल है, मतलब ये कि वाकई में ये स्पीक नहीं कर रही है, ऑन डिमांड स्पीक कर रही है एज द स्क्रिप्ट इज प्रोवाइडेड। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो एक तरह का डीप फेक प्रोड्यूस के इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है कि वो ये बंदी ये बात बोल रही है। ऑब्वियसली इसके पीछे लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ फोटोग्राफी इन्वॉल्व है, जो कि डिफरेंट एंगल से कर रहे हैं, लेकिन वंस दे हैव डन, तो यहाँ पर आपको एक इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है कि आप किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर डिफरेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हो कैरेक्टर्स, और आप उनसे जो है वो अपनी बात बुलवा सकते हो। Now this is one of the startup that has actually blown my mind away. What if bringing those stories to life Include or isn't limited by our resources, but only by our imagination? Welcome Live to Wonders. CGI We're making is as simple as selecting your actor is as and simple as assigning a selecting character. your actor and assigning The a system character. uses AI to track the The actor's system performance uses AI across to track cuts the actor's and automatically performance animates, across cuts lights, and and composes the automatically CG animates, character lights, and directly composes into the the CG scene. character directly into the scene. Whether it's one shot or a full Whether it's sequence, one shot Wonder or a Studio full sequence, analyzes and Wonder captures Studio everything analyzes from and body captures motion, everything from body motion, lighting, compositing, lighting, compositing, camera motion, and it even tracks the actor's facial performance. tracks the actor's facial performance. All the artist needs is a All the camera. artist needs is a camera.
Filmmaking is a medium of creativity and collaboration between artists. There's no AI that can replace that. Wonder Studio was built to empower those artists while still keeping the existing 3D process in mind. Alongside the rendered results, Wonder Studio gives you the ability to export the individual layers you need to deliver your final visual effects shot. Whether it's lighting, camera, or animation, you can maintain full control and make detailed adjustments in 3D space. From the paintbrush, to the typewriter, to the camera, tools have always been an extension of the artist, a means to help our voices be heard. With Wonder Studio, we hope the world hears yours. वाओ, अब अगर आप ये पिछली वीडियो को आप देख चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मूवी जनरेशन और दुनिया कैसे तब्दील होने जा रही है। और अब जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और उसके अंदर डेमो दिखा रहा हूँ वो रनवे एमएल है, एंड दे आर एक्चुअली टेकिंग ऑल ओवर द प्लेस ओवर द ट्विटर। और आप उनका Gen 2 मॉडल देखिएगा। Not too long ago, Runway pushed the boundaries of generative AI with Gen 1, a video-to-video model that allows you to use words and images to generate new videos out of existing ones. In the weeks since launching, the model has constantly better temporal consistency, better fidelity, got better results. better. And as more and more people gained access, we unlocked entirely new use cases and displays of creativity. And today, we're excited to announce our biggest unlock yet: text to video with Gen 2. Now you can generate a video with nothing but words. No driving video, no input image. Gen 2 represents yet another major milestone and another monumental step forward for generative AI. With Gen 2, anyone, anywhere can suddenly realize entire worlds, animations, stories, anything you can imagine. Gen 2, coming very soon to runwayml.com. जबरदस्त। आई कांट वेट टू सी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो कि बनने वाली हैं। फेसबुक के ऊपर आप ऐड चला रहे हो या आप कहीं भी ऐड चला रहे हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट आपने फॉर एग्जांपल आई सी फ्यूचर टूल्स जहाँ में अपने प्रोडक्ट को डाला और आपने कहा कि हैंडशेक हो रहा है, प्रोडक्ट मेरा लोग खरीद रहे हैं, एक हाथ से प्रोडक्ट लिया जा रहा है, एक हाथ में प्रोडक्ट दिया जा रहा है, इस तरह की वीडियो आपने बनानी है तो आपको कोई फोटो शूट की और वीडियो शूट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनरेटिव एआई जो है ना वो आपके लिए वीडियो क्रिएट कर देगी और आप जो है वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकेंगे। तो याद रखेंगे वो लोग आगे जो बेहतर क्रिएटिव उनको ये टूल्स इस्तेमाल करने होंगे और उनकी जॉब्स जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व कर जाएंगी। तो बहुत सारा नया काम होने जा रहा है, दुनिया जो है वो तब्दील होने जा रही है। दिस इज अनदर टूल जिसको मैंने देखा था और आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि वो इसी की इंस्पिरेशन want, and it will generate a video based on what you want. And here's some examples of what it's generated. As you can see, it's not really like an animation. It's more a series of images that are all kind of blending together. It's more of what this style is doing. And go ahead and create something real quick. You can actually see one that I generated once already. A wolf howling at the moon on a snowy mountain. So what it essentially seems to be doing is taking my prompt here, a wolf howling at the moon on a snowy mountain, and then it's using one of the generative art platforms, DALL-E or Stable Diffusion. I'm not actually sure which one this uses, and it generates a whole bunch of images based on that prompt, and then it animates a lot of those images together. That's what it appears to be doing. So let's go ahead and create a new one here, a monkey wearing a top hat eating a pineapple on the beach. Let's go ahead and generate and see what it comes up with. So it started by generating an image. This is our sort of first frame of the image here. And because I had this auto style selected, you can see it added additional styling to it. Let's go ahead and click on this here, a monkey wearing a top hat eating a pineapple on the beach, and then it added warm shades, concept art, Kodak Ultramax 800, architectural HD, insanely detailed center composition in pastel, solid color, and thick uneven outline. So it added all of that extra stuff on its own because I had auto style selected. And so this is basically the first frame of the image. Let's go ahead and click customize. I could tweak the prompt a little bit if I want to. I can add some negative prompt here, change the length,
the exploration, dial up the mayhem. Let's go ahead and dial up the mayhem. Still That जो है sounds वो fun to me. prompting एक बहुत Dynamism, बड़ा आर्ट how है जो कि fast आपको इस वीडियो content में दिख changes रहा है. over time. Let's go ahead and crank that up a little bit. Let's leave the smoothness to 100, leave a seamless loop, and let's go ahead and up the length a little bit, see what that does. And let's go ahead and leave the prompt the same and see what it generates for us. And here's what it came up with. You can see it's generated a whole bunch of different images, and it's sort of morphing between all the various So अलग-अलग इमेजेस को इसने बनाया है और फिर उनके दरमियान वो मॉर्फ कर रहा है, मतलब एक इमेज से दूसरे इमेज के दरमियान ऐसे चेंज कर रहा है कि जैसे आपको फर्क महसूस बहुत कम हो, इवॉल्व कर रहा है. तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त काम कर रही है और आज जो है वो हमारे साथ मौजूद भी है. एक पाकिस्तानी स्टार्टअप भी पाकिस्तानी कंपनी मौजूद है जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पे काम भी कर रहे हैं. बहुत मेन स्ट्रीम मार्केट के अंदर जो है वो एक पॉपुलर ऐप के तर्ज पर अपनी ऐप भी मुतारिफ करवाई है. तो हम उनसे भी आज बात करेंगे कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे क्या क्या बनाया है और किस तरीके से किया है. सो दिस इज वन ऑफ द अनदर थिंग जो कि आपको नजर आ रहा है कि फ्यूचर में जो काम होने जा रहा है वो कि आपने प्रॉम्प्ट्स लिखने काइबर एआई जो है वो एक और टूल है जो कि प्रॉम्प्ट्स लिखते ही जो है वो आपकी वीडियो बनती जा रही है. आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि इमेज जनरेशन ही नहीं बल्कि सिर्फ वीडियो जनरेशन के अंदर भी जो है वो ये सारा काम होने जा रहा है. सो आई होप सो कि आपका जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट बना रहा होगा. और अब जो है वो मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप माइंड ब्लोन हो जाएंगे और भी क्या फर्दर काम हो रहा है, जरा देखिएगा. सो 3 तरह के मॉडल्स हैं. टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन है, पर्सनलाइज्ड वीडियो जनरेशन है और कंट्रोलेबल वीडियो जनरेशन है. इस पहले वीडियो के अंदर आपको जो यहाँ पे नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि जो भी प्रॉम्प्ट दिया है उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर आपको इमेज जनरेट कर रहा है. जैसे येलो टाइगर विद लाइटनिंग, तो उसके अराउंड में बिजली आ रही है. अब सेकंड अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके पास कैंप फायर एट नाइट या गोल्डन रिट्रीवर ईटिंग ट्रॉपिकल आइसक्रीम और साथ में जो है वो आपको कुछ इमेजेस नजर आ रहे हैं. अब फीचर 2 की मैं बात करता हूं जहां पे पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट टू वीडियो है. अ मंकी इज प्लेइंग अ पियानो लिखा हुआ है. ठीक है जी. तो सबसे पहले जो है उसने एक वीडियो प्रोड्यूस की, उसके बाद दूसरी वीडियोस प्रोड्यूस की, फिर तीसरी और चौथी. अब हर एक के अंदर अलग अलग प्रॉम्प्ट दिया हुआ है. पहले के अंदर जो है वो कहा गया है, एक और एग्जांपल दी गई है इंटेंस बैटल प्रॉम्प्ट. दूसरे के अंदर एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स. तीसरे में टेडी बियर इज मेकिंग अ पोर्ट्रेट. अ मैन इज प्लेइंग अ सैक्सोफोन. ठीक है. तो यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो की बहुत सारी एग्जांपल्स है. अब ये तीसरा वाला तो बहुत जबरदस्त किस्म का फीचर है जिसके अंदर आपने नोटिस किया कि ऊंट चल रहा है. अब वो ये बोल रहा है कि कैमल वॉकिंग ऑन अ स्नो फील्ड. उसने कैमल को स्नो फील्ड पे वॉक कराना शुरू कर दिया. दिस इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग एंड एक्चुअली फैक्ट ट्विस्टिंग एज वेल. तो मैं बहुत ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज को जो है वो प्रूडेंटली इस्तेमाल करने का कॉल देता हूँ कि ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव यूसेस भी हैं और नेगेटिव यूसेस भी हैं. तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है वो वीडियो क्राफ्टर अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म को फ्री है तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट में यूटिलाइज भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो मेरा सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, हमारे साथ मौजूद है रेड बफर से मिस अक्सा कौसर और अब्दुल हफीज़ जो कि रेड बफर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये अपना तारुफ बहुत अच्छे तरीके से खुद करवाएंगे और अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे. तो आई विल बी क्विकली गोइंग टू ओवर टू यू अक्सा एंड अब्दुल हफीज़. तो प्लीज़ क्या आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अक्सा क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है? Yes, I can hear you well. ऑलराइट. और आपके कोलीग फहद के नाम से आए हैं? Yes. ओके. सो मैंने फहद को ऐड कर दिया है एंड आई एम गोइंग ऑन म्यूट. ओवर टू यू गाइस. आप लोग स्क्रीन भी प्लेलिस्ट शेयर कर लें ताकि हम कॉन्फ़िगर्ड हो जाएं. Yes. Let me share my screen. Just give me a second. तो ऐसा आपने स्क्रीन शेयर कर दी है.
अक्सर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं. आपने स्क्रीन शेयर कर दी है. I just need a minute. Oh, all right. मीनवाइल प्लीज़ ऑडियंस कमेंट करके बता सकती है कि अब तक का सेशन आपको कैसा लगा, और अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा. हम आपके फीडबैक से लर्न करते हैं और अपने आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स और जो हम अरेंज करते हैं सेशंस, उनको इम्प्रूव कर सकें. प्लीज़ कमेंट ज़रा ड्रॉप कीजिएगा ज़रूर. आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो भी बताइए. एंड हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ द जनरेटिव एआई, कैसे आप आगे देख रहे हैं. आपने जो बहुत सारे यूज़ केसेस देखे हैं, आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी ज़रा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम समझ सकें. कनेक्टेड लोगों को मैं अपडेट देता चलूं कि हम ज़रा सा वेट कर रहे हैं स्क्रीन शेयर होने का, और जैसी स्क्रीन शेयर होती है तो हम सेशन को रिज्यूम कर रहे हैं. ऑलराइट, कुछ टेक्निकल इशू है हमारे स्पीकर के साथ, तो वो रीजॉइन करेंगे 5 मिनट्स के अंदर. तो मीनवाइल जो है वो, अगर मैंने मिस कर दिया है जो इमेज जनरेशन वाला पार्ट, तो आप लोग प्लीज़ ज़रा कमेंट करके अपने बारे में बताएं कि आप लोग को सेशन कैसा लगा, और आप क्या यूज़ केसेस देख रहे हैं आगे जनरेटिव एआई के. अपने जो आपके डेली लाइफ है उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं यूज़ केसेस. Okay. जी अक्सर हम So, आपको आवाज़ जी अब आपकी आवाज़ आ रही है. can you? Yeah, okay, sounds good. Thank you. Thank you for having us, firstly. Just going to introduce myself. I am Aksa Gosar, Head of AI at Red Buffer. I am also a Google developer expert in machine learning. So this presentation is about AI Photos, which is a recent product by Red Buffer. So I'll go into more detail of what this product is, and my colleague is here to basically get into the technical details of this product, since they basically worked on most of it. So starting a little way back, Stable Diffusion, some of you may have heard of it. For those who have not, it's basically
the base model, the open source generative deep neural network model that basically allowed a lot of people to build projects on image generations and video generations. Stable Diffusion in itself was, it came out in August 2022, and it's basically a text to image model. The core model type that Stable Diffusion is, it's a latent diffusion model. Fahad will explain more about what latent diffusion models are, but if I have to give you like very simple, just for starters, so that you keep this in mind as we go through the presentation. So it's a latent diffusion models are basically neural networks that, for example, if we have an image and we put in a lot of noise in that image, right? So we keep adding noise to that image to an extent that it becomes just a noisy image to our eyes. So latent diffusion models are basically neural networks that learn how to reverse that. So how to basically reverse those noisy images into their actual images, right? So an example of this can be seen here. So from a noisy image, we got the cat image, and the model had learned how to denoise this image into a cat. So when Stable Diffusion came in, we basically saw a lot of things coming on Twitter, on Facebook, and we had people posting these things about generating their images through AI, and we saw basically people who had never really interacted with AI in direct forms to be posting a lot about it, that okay, ये मेरी AI से image generate हुई है, ये मैंने AI से avatar generate किया है. And some of that credit actually goes to avatarai.me website. So this was one of the websites जो कि start में right after Stable Diffusion काफी hype हुई थी, and a lot of people used it to create their avatars. So you would basically give a few of your images, about 20 good quality images, and then it would give you results in different styles, and some of those styles you can see here. So this is an example of Avatar AI. Similarly, then we had Lexica. Lexica is also a website where you are using models, latent diffusion models, to basically generate text-to-image models to generate these kinds of amazing arts. So this is one website as well. So how did we actually come up with AI photos? So the interesting story behind that is that we have something called RB Labs at Red Buffer. So RB Labs is basically a place where we, it's funded by Red Buffer itself. It's the purpose of this RB Labs is basically to provide resources to engineers to experiment with different ideas, like any ideas that they may have, and they want to work on those ideas. Usually those are always around, obviously, the cutting edge technologies. For example, BERT, when BERT came in, we had engineers experimenting with those models. When GPT came in, we had people experimenting with those. And our purpose is obviously for them to learn through experimenting with these, and also to stay up to date with these new advancements in AI. So AI Photos is basically an RB Labs graduated product. So our engineers, including Fahad, started working on this, and it eventually came to a point where it got graduated as a product of Red Buffer. So we are part of the team that worked on it, and this is one project where a lot of our juniors from both the web team and the ML team worked on making this product a success. So what some of the key features and some of, I would say, like slight differences from the other products and websites that were already out there. So the common thing was that it was AI avatars generation. So you were generating your avatars through AI. What we added was that we added an extension to couple avatars. So you were not just creating avatars for yours, for male and female. You could also create amazing styled AI images for couples as well. And then a recent addition to it is basically a video generation, where you can generate videos of yourself from male, female, and also for couples. And then for obviously ease of use, we also have a mobile app that's in process. So for the rest of the technical details, I would obviously want
definitely want Fahad to step in. He's one of the core members who worked on this product and contributed a lot, not just on the modeling integrations part, but also on the overall infrastructure of this product. So over to you, Fahad. Let me stop sharing my screen so you can share yours. जी फहद आप स्क्रीन शेयर कर लें प्लीज. I think he'll need a minute to share his screen. Yes, मैंने शेयर कर दिया. Yeah, so is my screen visible? उम्मीद है कि सब लोग स्क्रीन फहद की देख पा रहे होंगे. So, Assalamu alaikum. Thank you for the introduction, Aksa. So, I'm Abdulafiz Fahad. I'm currently working as a machine learning engineer at Red Buffer. And सॉरी आपकी फहद आवाज कट के आ रही. I can actually hear him completely fine. All right, all so right. can we can also hear him fine. All right, फिर आप कंटिन्यू करें प्लीज. So yes, so I'm currently working as a machine learning engineer at Red Buffer. So the topics that I will be covering today is why avatar generation came into existence, what is AI photos, how does the AI photos works, what is stable diffusion and how does the stable diffusion works, and some pros and cons of stable diffusion. And at the end, I'm going to show you some samples regarding AI photos. So let's start with it. So I still remember there was this movie named Avatar, which came in the past few years. So the first thought that comes to your mind while looking at that movie is that how will I look if I transform myself into an avatar? So, well, thanks to Air Photos or thanks to the Stable Diffusion community, that imagination is now a reality. But whenever we talk about why avatar generation came into existence, क्यों stable diffusion models आए market में, so there are some problems there that were in the market earlier. So let's talk about those problems. So whenever we talk about avatar generation, the problems that the tech industry was facing is that it was really difficult to capture the complexity and variability of human appearance, and also it is a time consuming and also a labor intensive process, to manually sculpt each individual element of the human feature. And furthermore, the results are often unrealistic, and you have a limited range of expressions and movements that could be captured using those traditional methods. And by using those traditional methods, you have to deploy a large team, and it's quite expensive. So that was the main idea behind it. So when we talk about the solution, or how does the avatar, how does the artificial intelligence caters those problems? So artificial intelligence enables the creation of realistic digital representations of human faces and bodies. And I can assure you that the outcomes are almost indistinguishable from the real photographs. And furthermore, it can create digital identities for people in the virtual and as well as the augmented reality environments. और जैसे कि अभी इस सेशन में भी बताया जा रहा था कि it can be used in movie productions and for the advertisements as well. And the main thing is, like, you can create highly realistic characters or environments that would be difficult to create using the traditional methods. So let's talk about AI Photos, the product that was launched by Red Buffer in the year 2023. AI Photos is an avatar creation tool. It generates over 150 avatars of yourself.
it also generates an animated video which showcases the aging process. And we have included some more features in this product as well. Uh, so, like for example, first was to detect the faces of the input images. So you neglect all of the noises that are in the input images. And furthermore, we have a package as well in AI photos that produces a really high quality 4K output images, and the categories are male, female, and you can also produce it for couples as well. So yeah, but the AI photos was developed on top of Stable Diffusion, and as Aksa already told, that Stable Diffusion is like a latent diffusion model, which is used for creating high quality realistic images. So, how does the AI photos work? The product itself is fascinating. If you give it a try, I'm sure you'll be assumed. But all of the back engine behind the AI photos is whenever a user uploads his or her images on the website, we fetch those uploaded images. We apply the face detector on those images in order to, neglect the noise out of all the images, and we train the model. Actually, we fine tune it on top of Stable Diffusion for several steps. And once the model is trained, we get those weights and we preserve the weights for the avatar creation using the prompts. So the fourth step in the pipeline is really important, that includes the prompt engineering that took our major time in developing AI photos. So prompt engineering is a really important feature in image generation or products like AI photos. And the last step is that if you opt the specific package, your outputs will be upscaled to 4K images. So this was the image generation of the pipeline for the image generation of AI photos. But there is this other feature of AI photos, which is known as the video generation. So in the first step, while training the model, we preserved those weights. Those weights are used for the video generation. So we convert the weights back to diffusers. uh, जो डिफ्यूजर्स के बाद वाला स्टेप है उसमें ये होता है कि हम लोग कॉन्फ़िग्स को लोड करते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जो कि हमें वीडियो जनरेशन के लिए चाहिए होती हैं। हम उन डिफ्यूजर्स को लोड करते हैं जो हमने वेट से कन्वर्ट करके बनाए थे। एंड again, the fifth step is to generate animations or frames depending upon the prompts. और जब वो फ्रेम्स हमारे पास एक दफ़ा से आ जाते हैं या वो एनिमेशंस आ जाती हैं, तो जो वीडियो जनरेशन का जो मॉडल है वो उन सबको कंबाइन करके एक हाई एंड वीडियो आपको क्रिएट करके दे देता है. So what now AI photos is doing is like it creates an aging process of the human जो कि input images से हमारे पास आ रहा होता है. So एज आई हैव टोल्ड यू कि एआई फोटोज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग एआई मॉडल दीज डेज है, दैट इज नाउन एज स्टेबल डिफ्यूजन. So we are going to talk about stable diffusion, that how does it works, or what are the benefits of working with stable diffusion. So talking about the stable diffusion, it comes from a class of deep learning models that is known as diffusion models. और ये एक generative model है, and इसकी capability जो है वो ये है कि it is designed to generate new data similar to what they have seen in the training data. और अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इट्स रियली अ टेक्स्ट टू इमेज मॉडल. जब आप इसको एक टेक्स्ट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको एक इमेज प्रोवाइड कर देता है. सो अगर हम इन डेप्थ बात करें स्टेबल डिफ्यूजन की, तो उससे पहले हमें मतलब समझना चाहिए कि फॉरवर्ड डिफ्यूजन और रिवर्स डिफ्यूजन एक्चुअली क्या था और स्टेबल डिफ्यूजन क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया. So talking about the forward diffusion is nothing, as you can see in the diagram, it's just like an image. उसमें noise add कर देते हैं training image में और आपके पास एक बहुत noisy सी image आ जाती है.
जो कि फॉरवर्ड डिवीजन की एक आउटकम होती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो आपके पास नॉइज़ी इमेज है, उस मतलब इसकी एग्जांपल इस तरह से फॉरवर्ड डिफ्यूजन की कि थिंक लाइक यू हैव अ कप ऑफ वाटर and you drop an ink into that cup. So जब आपने वो ड्रॉप ऑफ इंक जो पानी में डाल दिया है उस वो एक टाइम देखेंगे कि आप वो डिफ्यूज कर जाता है उस पानी के अंदर एंड यू हैव नो ट्रेस कि वो ड्रॉप कहाँ पे गिरा था और क्या हुआ था. So that is what forward diffusion is doing. और इसके बाद फिर जो हमारे पास रिवर्स डिफ्यूजन आता है उसमें हमारे पास बैक ट्रेस होता है सारा का सारा कि हमारे पास जो नॉइजी इमेज आई है उससे हम लोगों ने एक हाई एंड इमेज किस तरह से क्रिएट करनी है. सो रिवर्स डिफ्यूजन इज जस्ट लाइक प्लेइंग अ वीडियो बैकवर्ड्स, गोइंग बैकवर्ड्स इन टाइम, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वेयर द ड्रॉप वाज इनिशियली एडेड. So that was an example in order to understand what forward diffusion or reverse diffusion क्या करते हैं. So starting from a noisy image, reverse diffusion recovers the high end image जो कि आपकी एक resultant image होती है, either वो cat में होगी या dog में होगी. So diffusion always occurs in two steps. Diffusion either वो drift or directed motion में हो सकती है, either it can be in random motion. But there is an issue with all these processes. Forward diffusion और reverse diffusion में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है जो कि इमेज स्पेस का है. So what happens कि जब आपके पास एक ट्रेनिंग इमेज है, जब आप उसमें नॉइज ऐड करते हैं या उसको कन्वर्जन कर रहे होते हैं, so that noisy image is generated using the image space. So by image space by image space ये होता है कि आपकी जो जो स्पेस है वो काफी इनॉर्मस हो जाती है. सो फॉर एग्जांपल कंसिडर यू हैव एन इमेज ऑफ 512 क्रॉस 512 with three channels that are RGB. So you might have calculated that जो आपके dimensional space में एक image के लिए जो factors होंगे वो आपके पास 7,86,432 होंगे. It's simple maths कि आप 512 cross 512 करें तो आपके पास इतनी factors आ जाते हैं. But in order to cater this large enormous image space, stable diffusion simple form में क्या करता है कि वो इस इमेज स्पेस को रिप्लेस कर देता है लेटेंट स्पेस से. सो we'll come back to the latent space, but we'll talk about stable diffusion in the simplest form. So what stable diffusion is doing, it takes a text as a prompt. Text encoder में जाता है वो, and the encoded text is then fetched towards diffusion model, और diffusion model के आगे फिर एक decoder लगा होता है जो कि उस text से यूज करते हुए आपकी इमेज जनरेट करता है. But talking about the stable diffusion in depth, stable diffusion is a latent diffusion model. और ये जो काम करता है ये एक स्पेशल टेक्निक पे चल रहा होता है which is known as variational encoder, auto encoder. So सिंपल स्टेप्स में अगर बात की जाए स्टेबल डिफ्यूजन की तो वो ये कर रहा होता है कि आपके पास जब आपके पास एक इमेज आती है उसको कंप्रेस करता है latent space में. So the thing that we were talking about earlier is कि image space को replace कर दिया latent space से, because latent space जो है वो आपकी 48 times smaller होती है than that of the image space. So what is the benefit of latent space? So it reaps the benefits of crunching a lot few numbers. मतलब आपके पास 48 times smaller एक space आ गई है तो जाहिर सी बात है कि वो image space से काफी कम है. And due to that जो हमारा ये सारा process होता है it is a lot faster. So so coming back to variational autoencoder में हमारे पास दो main modules होते हैं, which is the encoder and which is a decoder. So encoder का काम क्या होता है कि encoder compresses the image to a lower dimension, और decoder का काम क्या होता है कि decoder restores that image from the latent space. So अगर सिंपल स्टेप्स में ट्रेनिंग की बात की जाए स्टेबल डिफ्यूजन की तो जब आपके पास एक इमेज फेच होती है स्टेबल डिफ्यूजन के मॉडल में तो आपके पास एक नॉइजी इमेज क्रिएट होती है. आपका एक रैंडम टेंसर या in simplest words you can say एक random vector initialize होता है एक latent space में, और उसी के बेस पे latent noise ऐड होता है
और डिकोडर आगे उसको प्रोसेस करता है, एंड देयर इज दिस कंपोनेंट व्हिच neglects all of the noises, which is basically trained on के how much noise is added to an image, तो वो उसको neglect करके आपको एक high and output image दे देता है. So the basic theme of adding variational autoencoder into the stable diffusion is कि ये a lot faster होता है. Or that was about the stable diffusion, but there is this another really amazing feature about AI photos, which is the generation of animated videos. और ये हम लोग create करते हैं using the deform stable diffusion. So what is deform stable diffusion? Deform stable diffusion एक version है stable diffusion का, which is entirely focused on creating videos and transition of images. But वो जो images होती हैं या वो जो frames होते हैं वो आपके still stable diffusion से create हो रहे होते हैं. So deform is on top of stable diffusion for creating certain videos. So how does it works? Deform stable diffusion किस तरह से काम करता है? पहले आपके पास कुछ configuration files होती हैं, डिफॉर्म के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिफॉर्म के एनिमेशन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और आपके पास एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स होते हैं. सो एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स इज समवट लाइक द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इटसेल्फ, जो हम लोगों ने फोटोज के लिए अलग की हुई है और वीडियो जनरेशन के लिए अलग की हुई है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू लोड अ कस्टम मॉडल, जो कि हम लोगों ने ट्रेनिंग के वक्त प्रिजर्व किया था शुरू में, जो कि हम लोग डिफ्यूजर्स में कन्वर्ट कर रहे थे फॉर यूजिंग इट इन डिफॉर्म स्टेबल डिफ्यूजन. वही मॉडल यहाँ पे लोड होता है, विच इज ट्रेन्ड ऑन द यूजर इमेजेस. और द नेक्स्ट स्टेप इज टू you have 4 distinct animation systems in which we have to select one while developing this feature. Deform stable diffusion के लिए आपको या तो 2D रखना पड़ता है उस फीचर को, या फिर आपके पास 3D होना चाहिए, या फिर सिंपल एक वीडियो, या फिर इंटरपोलेशन मेथड्स, जिसमें आपके पास फ्रेम्स जो है वो आप इंटरपोलेट करके एक वीडियो जनरेट कर सकते हैं. So animated video, as you might have seen के सिर्फ जो stable diffusions के जो आपके पास frames generate हो रहे होते हैं उनसे एक animated video generate होता है, और end पे हमारे पास कुछ arguments होते हैं, like जब एक video generate होती है तो कितने उसके frames per second होने चाहिए, उसके frames के folders क्या होते हैं, तो हम लोग उस तरीके से उन frames को combine करके एक deform video generate कर लेते हैं. So, while working with stable diffusion, while developing all these products, हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि stable diffusion के pros काफ़ी ज़्यादा है, but still उनके cons भी हैं. So let's discuss about those pros and cons of stable diffusion. So if we talk about the positive aspects of the stable diffusion, they are like able to generate high quality and realistic image of humans, can generate avatars with different facial expressions. और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि न्यूरल नेटवर्क्स जो डीप लर्निंग मॉडल्स हैं उनको काफ़ी बड़ा डेटा सेट चाहिए होता है फॉर टू बी ट्रेन्ड ऑन देम. तो इसमें इस तरह से नहीं है. जैसे एआई फोटोज में हम लोग अराउंड 15 प्लस इमेजेस लेके आपको एवटार्स रिटर्न कर देते हैं. सो डज नॉट रिक्वायर अ लार्ज डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग इमेजेस. और लेकिन जो इसके कॉन्स हैं वो भी काफ़ी you should consider while working on this feature. जो कि सबसे पहला कॉन जो हमें नजर आया था स्टेबल डिफ्यूजन में इज लाइक दे कंप्यूटेशनली इंटेंसिव. आपको बहुत एक पावरफुल हार्डवेयर चाहिए in order to train or fine tune the model or generate avatars. और जो इसका दूसरा कौन है वो ये है कि it might generate avatars जो कि insensitive होंगे certain groups और characteristics के लिए, may produce artifacts or visual inconsistencies in some generated images. So ये pros and cons थे stable diffusion के. So at the end of today's discussion, I'm going to show you some samples that were generated using AI photos. So as you all know कि हमारे पास 3 categories थी, male, female and couple. So these are the sample results for the male. These are the sample results for the female. And these are the sample results for the couple. And the amazing feature of AI photos, जो कि एक video generation था, उसके samples ये हैं.
So Fahad, can we play this once more? yeah, sure. So this was a sample result for a male, and this is a sample result for female. And similarly for a couple. So these were some samples related to AI photos, and I personally think that the artificial intelligence or these generative AI models are going to change the world. And yeah, that was it. But at the end, I would like to inform you that do give it a try. And I'm sure you will love the digital representation of yourself in the virtual world. The link is will be displaying on your screens. Do give it a try. So लिंक that जो है was वो it. स्क्रीन पे दे दिया गया है. Thank you so much Fahad and Aksa for your valuable time, and I was really having fun seeing this entire presentation और किस तरीके से स्टेबल डिफ्यूजन काम करता है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझाया. एंड अच्छी बात यह है कि ये सेशन रिकॉर्ड हो गया है, तो बाद में भी कोई देखना चाहे और उर्दू में समझना चाहे कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है, तो आपका ये सेशन जो है वो रेफर होगा, फ्रूटफुल होगा. तो अगेन थैंक यू सो मच अक्सा एंड फहद फॉर ज्वाइनिंग. Thank you for having us. Thank you for having us. ऑलराइट, सो मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं और जो है वो प्लीज जरा बताइएगा मुझे कि आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं. जी, क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं दोबारा से? प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं. एहसन, क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes. ऑलराइट, सो हम अपने सेशन के आगे आखिरी वाले जो सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं. दैट इज ऑडियो जनरेशन. एंड एआई जो है वो ना सिर्फ इमेजेस जनरेट कर रही है और वीडियोस जनरेट कर रही है जैसा कि हमने देखा, साथ में एआई जो है वो म्यूजिक भी जनरेट कर रही है, बिकॉज म्यूजिक इज वन ऑफ द अनदर क्रिएटिव साइड ऑफ अ ह्यूमन इटसेल्फ, जहाँ पर म्यूजिक, आर्ट्स और अच्छी आवाज निकालना जो है वो ह्यूमन क्या कैपेबिलिटी है. मगर अब जो है वो ये क्रिएटिव कैपेबिलिटी एआई के पास भी आ रही है, बिकॉज इट्स ऑल अराउंड द सीक्वेंसेस एंड थिंग्स. तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एआई काम कर रही है. सो ऑडियो जनरेशन के अंदर जो बहुत सारे यूज केसेस अवेलेबल है हमारे पास, वो है दैट इज अराउंड द साउंड, म्यूजिक एंड वर्चुअल वॉइसेस. तो या तो आपको कोई वर्चुअल वॉइस क्रिएट करनी हो, मतलब ये कि वो रियल वॉइस ना हो, आपने एक वॉइस ओवर करना है और आपने एक वर्चुअल वॉइस क्रिएट करी,
एंड दैट इज फ्री, रॉयल्टी फ्री वॉइस, और आप उसके ऊपर अपनी जो है वो आवाज को यूज कर सकते हैं। आपने शायद सिंथेसिया के अंदर भी इसका डेमो देखा होगा। अनदर पार्ट इज द जनरेटिव एआई, जहां पर हम बात करते हैं कि मेरी वॉइस का कुछ देर का सैंपल यूज करते हुए आपकी आवाज जो है वो क्लोन हो जाएगी, और ऑब्वियसली जो भी कुछ लिखवाना या बुलवाना चाहें वो आप मेरी आवाज में बुलवा सकते हैं। दैट इज द वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। इन सब के पीछे जो है वो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी और मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। म्यूजनेट है, गूगल का LLM है, बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एसन जो है वो आपको डिटेल में जरूर बताएंगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, प्लस इसके बहुत सारे हमारे पास जो है वो यूज केसेस है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, म्यूजिक कंपोजिशन है जिसके अंदर आपके पास साउंड डिजाइन है, इसके अलावा पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स है, ये सारी ऑटोमेट होने जा रही हैं कि आप मुझे सुना दो, तो आप जो है वो प्ले करेंगे, वो वहीं से टेक्स्ट पास होगा आपके पास जो है वो दूसरे मॉडल को, और वो उसके अंदर जो है वो आपको एक आर्टिफिशियल वॉइस के अंदर जो है वो आपको आपकी ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट को जो है वो आपको कवर कर रहा होगा। अनदर इज द फॉरेंसिक ऑडियो एनालिसिस, जहां पर वॉइस टेम्परिंग हुई भी या एनहांस करनी ऑडियो क्वालिटी, तो इन सब यूज केसेस के लिए भी पॉजिटिवली इस्तेमाल हो सकती है ऑडियो जनरेशन। बहुत सारे स्टार्टअप्स थे, मैंने कुछ स्टार्टअप्स का यहाँ पर जो है वो आपके पास वर्ड क्लाउड बना दिया है, न्यू फ्रंटियर है, इंस्टेंट म्यूजिक, आपके पास इंस्टेंट म्यूजिक है, AI वॉइस सेक्टर्स हैं, इसके अलावा AI जो है वो कंपोज कर रही है साउंड ट्रैक्स और म्यूजिक को। तो बहुत सारे हमारे पास स्टार्टअप्स हैं जिनके कुछ यहाँ पर आप When making video content, finding a soundtrack of the same duration becomes a challenge. Music from audio stock almost never works, and trying to find the right track takes forever. Mubat Render is an app that creates soundtracks of specific duration. Perfectly fits your video or podcast. Select mood or genre, set duration, and generate a track in a matter of seconds. Listen, enjoy, download, use it for your content, or make numerous tracks and see which one you prefer. Limitless music made by creators with the help of AI. आई थिंक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो है वो आज और आगे आने वाली है, जिसके ज़रिए हम अनलिमिटेड म्यूज़िक जनरेट कर सकेंगे और हमें म्यूज़िक आर्टिस्ट की इमीडिएट ज़रूरत नहीं होगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि उनका रोल डिप्लीट हो जाएगा, मगर उनका अगेन रोल एलिवेट भी हो जाएगा। आगे भी हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज देखने वाले हैं। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ गूगल, जहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया गया है। अगेन यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग इन्वॉल्व हो गई है। Music being generated with such high quality and faithfulness to the text prompt is something we have never seen before. Even though you can still hear something coherent. अब ये मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, लेकिन आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि AI जनरेटेड म्यूजिक है क्या। अब यहाँ पर कॉकी AI है जो कि वॉइस क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये एग्जांपल देखिएगा। I stand before you not as an expert. Well, a voice replication company used AI to generate the sound of podcaster Joe Rogan, One of the 400,000 people who marched in Steve Jobs, and the billions of others around the world. Robert Downey Jr., As an actor, I pretend for a living. and others. The technology to quickly clone someone's voice is available to anyone with an internet connection, giving them the ability to make manufactured content like this. I'm hungry. Hey boy, give me some chicken nugget. तो यहाँ पर आपको एक एंड में ये भी नजर आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन जो है वो यहाँ पर जो है वो वॉइस क्लोन करके जो है वो कंटेंट यहाँ पे कर दिया। अनदर दिस इज द डार्कर साइड एज वेल, कि जहाँ पर जो है वो फैक्ट ट्विस्टिंग चीजें भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, बट इसके बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस भी हैं। तो लेट्स स्टे पॉजिटिव और पॉजिटिवली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। अनदर दिस इज द रिजेंबल AI that actually Over the last 2 years, Resemble has been used by more than 250,000 people to create AI-generated voices from bots to ads, fashion shows, and even an Emmy-nominated Netflix documentary called The Andy Warhol Diaries. Our users have crafted beautiful voiceovers in seconds, and we've come up with new ways to create content that sounds even more real.
That's why we're proud to introduce arguably the most impactful feature for generative audio. We call it speech to speech. Let me show you what I mean. At the moment, you might be familiar with typing in a sentence and hitting the play button. Hope that worked out. If not, you have a few options. That sounds good, but my friend Liz wanted to say it slightly differently. Let's upload how she wanted to say it. Hope that worked out. If not, you have a few options. And let's generate this in Robert's voice. Hope that worked out. If not, I have a few options. We can use this to create AI voiceovers that truly match human-like performances, including all of the imperfections of human speech. You can apply any voice skin to your voice. Like an angry, aggressive voice that means business. Or super friendly, like my colleague Tanya. Or a whispering voice for when you want to be secretive. Speech to speech works in real time, which means I can replace my voice with another while talking. This is great for immersive applications that require fast speech generation. This works across all of Resemble AI's voices with stunning results in any voice imaginable. This opens up all sorts of possibilities for gaming, film, advertisement, and narrations. Combine this with our other products such as Localize, which allows you to dub content in over a dozen languages, Resemble Fill, which allows you to do neural editing, and a low latency API with streaming for instant results. To get started, head over to resemble.ai. I mean, this is very mind blowing कि किस तरीके से ये काम हो रहा है और स्पीच टू स्पीच इज वन ऑफ द नेक्स्ट फ्रंटियर्स. जैसे टेक्स्ट टू स्पीच मौजूद है, वो यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करें स्पीच टू स्पीच, मतलब जैसा मैं आवाज चाहता हूँ वैसी आवाज को वो अडॉप्ट कर ले. तो इट्स मोर ऑफ अ क्लोनिंग, बट अगेन टेक्स्ट टू स्पीच में तो इसलिए उन्होंने कहा है कि स्पीच टू स्पीच. दिस इज वन ऑफ द स्टार्टअप दैट इज play.ht और इनका आप ट्यूटोरियल देखिए. As the sun began to set on that warm summer evening, the old dog slowly made his way to the edge of the porch, gazing out at the endless expanse of fields that stretched out before him. Discover a whole new world of possibilities and productivity with our state-of-the-art computers that combine cutting-edge technology. Spider-Man does whatever a spider can. Catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Let's crush all the enemies. Move now. And bring glory to the frozen throne. My voice style right now is designed for commercials. I can also make my style as if I'm meditating. Check out my narrative voice by generating this style. Don't stop listening, as my voice style feels like you are in a training. I am now Optimus Prime. Use our voice generating software now. Only here on Play. वाओ, आई मीन दिस इज मार्वेलस, जो कि अभी हमने ट्यूटोरियल देखा. और अब मैं अपने फाइनल जो स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर एहसन मेमन, जो हमारे साथ मौजूद हैं, एक्कल एआई के ये फाउंडर हैं, और ये हमें जो है वो ऑडियो जनरेशन विद एआई का ट्यूटोरियल देंगे, तो कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिखाएंगे. और एहसन इज अ वेरी डियर फ्रेंड. वेलकम एहसन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस. Oh, you're welcome. You're welcome. I hope I'm visible. Yes, you are visible. Hello. That's fantastic. It's a great session, by the way. Thank you very much, Misam, for inviting me over. Thank you. It's always a pleasure, right? मैं अभी देख रहा था कराची है कि community किस तरह से it's booming and things are kind of picking up and a lot of people and interest is being generated. So really, thank you very much for kind of inviting me over to this session, so that I can maybe help some people or motivate them to join us in this new revolution that's happening around in the world.
Yeah, so I'll just quickly introduce what Echo does, but I'd like to share my screen. Let me see if I can present. Um, okay. Yeah, got it. All right. So I have this stream presenting as well. I hope it doesn't interfere. जी बिल्कुल नजर आ रही. Chale. So I'm one of the founders of Echo AI. We started working with this thing like probably 2.5 years ago. Echo was built with the idea that हमने AI करनी है, and with AI, I mean we were very clear कि भाई AI 2.5 years ago इतना इसका रुझान नहीं था. I mean I think Misam, you were one of those people who inspired me to get into AI really, to be honest. And then we kind of established this, and we started our journey with the audio actually, and we stick very dearly to it. और हम चाहते हैं कि इसके अंदर बड़ा कंट्रीब्यूट करें. इनफैक्ट वी डिड some contributions on the research side. एक तो US patents वगैरह कर दिए with speech to speech जो applications, some of them you might be looking at these days. We were very fortunate to have worked with them like 2 years ago, and then patents and papers वगैरह के through we were able to even create a commercial impact via them. More recently, the AI just exploded with ChatGPT, so I guess that is the talk of the town, really. But audio abhi, it's still very much alive, and I think there's going to be a big change, and kind of very, ChatGPT has already kind of created a new vibe, and it's already making all the difference on the commercial side. But there's a क्या कहते हैं सोता हुआ शेर, which is the audio that's going to take over the rest of the world, right? I'm going to talk to you about it a little bit as well. But yeah, Echo AI, we're particularly working with AI, and I would like to kind of talk to you a bit more about, let's say, AI key audio generation aspect and what is the bigger vision here, because I'd like to kind of not lose sight of that, because AI and अभी जितनी हड़ाहुड़ी में हम AI को कर रहे हैं, cover कर रहे हैं, I mean, it's great, but at the same time, like 2 years from now, 3 years from now, and then a 5-year goal, and then a 10-year goal, and then a 20-year, and a very long-term goal. ये हमारे जहन में होने चाहिए, because they kind of direct their technology as is. Like it's very similar to saying that like 1970s when computers were not prevalent, and the first computers were barely coming or surfacing them in the market. They were like those people who were thinking and who were the thinkers of the world, who would say that हमें computers को personalize करना है, and they were called visionaries, right? And those people kind of had a view of the world, जो multi-trillion dollar industry बन गई बाद में, which was computers. They had that vision like 30 years ago. So I would say that staying at the bigger picture, at least for some time of the day, really kind of helps us propel into that kind of future. If from the audience, we might have some students, and we might have some professionals as well, right? It helps all of us, really. The students ke liye, maybe it's the entrepreneurial line, and for maybe in the job perspective as well. You want to stay relevant like 10 years from now, right? You're not retiring in the 5 or in next 10 years, so you need to know where the AI is heading. So swiftly moving on, I believe I'd like to talk about like AI. Audio ke saath bhi see, audio is just a manifestation or an application of AI, right? It's about the same algorithms, and I'm going to talk about some of the AI or audio algorithms. But it's like there's a huge difference between the two AI systems, which is like modern AI systems, yeah, modern technology systems, and then the future of AI systems that we'll be looking at. And I'll kind of make a connection between this um, and I believe the say how the market will be morphed like in the 5 years to come. This is a similar technique, jiske base pe, I mean, way before ChatGPT kind of really came into being. At Echo, we were already kind of developing applications with GPT, with transformers. I mean, way before even OpenAI came into release their first GPT-3 models. We came up with like GPT Neo based models. I don't know, prior to those to the launch, because we knew that GPT or general purpose transformers were the future, right? So coming back to it, I think, see,
जो current systems हैं, I think the modern world, उसके अंदर AI is just a driver, right? So I would rather ask you guys the question, and I'd like to answer this myself as well because its interaction might be a bit difficult. But modern world में आप क्या देख रहे हैं? Like what fills most of the time in the human being's day? I would say if you're a student, studies, partying, right? I mean, talking to friends and all that, right? And um, pretty much it. I mean, sleeping, eat, sleep, code, repeat kind of thing, right? I mean, but if you're not coding, you're just partying and studying. So that is consistent of work, right? I mean, whatever you're doing. But if it's more professional audience, I mean, work fills most of your day. And why do you work? To earn a living, right? And to earn a living, you need to prove yourself to be useful to the world. If you're in a job role, if you're in an entrepreneurial role, you need to be useful to the world. How do you become more useful to the world? Just imagine a world without calculators. Just imagine that. I mean, calculators, I don't know, they came out probably over 100 years ago. But calculators से पहले हर काम pen paper pencil पे होता था ना, pencil से होता था ना. The As soon as the AI, as the calculators kind of came into being, what happened was everyone started using them and becoming more efficient. Now, thinking of it from a job perspective, anybody who would use not be using calculators would be inefficient, right? Because they could handle so many more calculations in such short amount of time. So जो कैलकुलेटर्स यूज नहीं कर रहे हैं उनको probably वो कहते हैं यार नौकरी नहीं मिलेगी, right? और अगर entrepreneurial effort है तो I mean startups या companies जो कैलकुलेटर्स यूज नहीं करती थी, they become irrelevant after a certain point. So अगर इसी तरह से आजकल के दौर में इसी चीज को translate किया जाए कि work or digital adoption, that is the modern world that we're looking at. But ever since, I don't know, the advent of AI in the past 4 or 5 years, I believe work plus digital adoption plus AI tools is becoming the new norm. And that goes with audio as well. Like, but आजकल I can hardly imagine my life without the use of ChatGPT. I mean, I'm writing emails every day, and excuse me, I'm writing emails every day, and I'm sending out messages to people. I'm using speech to text as AI all the time, AI all the time. So without these AI tools, my efficiency, like जो मैं 8 घंटे में deliver कर सकता हूँ in my work hours, that becomes greatly like affected, right? And in order to kind of avoid that, I have to use an AI tool. So I'm not only working with digital adoption and having a fancy laptop with me. It's the AI that drives my efficiency more than the digital adoption or digital devices that we have. And why did that come about? Why did that age kind of come about? It's very easy. जो समझ में ना आए ना, वो COVID पे डालते हैं. And that's actually a fact. This is a Hootsuite report that says कि COVID की वजह से ऑनलाइन डिजिटल एक्टिविटीज बढ़ गई. एंड पीपल जिनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता था वो वर्क फ्रॉम होम पे चले गए. आई मीन गवर्नमेंट ऑफिसेज वालों समेत सब जो है वर्क फ्रॉम होम पे चले गए हुए थे. आई मीन या एफिशिएंसी वेंट डाउन, बट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डिड लर्न to use laptops and presentations and remote working standards within that time. And a lot of these audio related and web related video conferencing related companies such as Zoom, I believe they increased their valuation like over 100 times because they became all the more useful, right? And that was because the digital presence kind of boosted the digital adoption. There was because of COVID, there was actually a bigger need of digital adoption. And according to some statistics, kind of, you can refer it here as well. The world moved 7 years in advance. I mean, global adoption or acceleration for digital items was 7 years. That was the acceleration. So the technology that was supposed to be adopted by human beings. I mean, आजकल VR glasses is a technology that's already there, and you can use audio and video and visuals and all kind of fancy AI with them, but nobody uses them. I mean, how many people from the audience or even around you uses them? Consider that with a mobile phone. Compare that with a mobile phone. Mobile phone हर कोई use करता है. Like 10 years ago नहीं use करता था, right? इसी तरह से अगर आप digital adoption देखें तो according to some studies, it's like जो technologies हमारी आम आवाम
2029 में यूज इसने करनी थी, 2030 में यूज करनी थी, वो आज हम 2023 में कर रहे हैं. And because of that, the whole global landscape has changed so much that everything is becoming more reachable now, right? Because people are open to learning these things. Coming, like, because of all of that scenario, what happened is, um, in the bigger picture, जो चीज़ें हम जिनके लिए रेडी नहीं थे, वो चीज़ें पहले आ गई हैं टाइम से. And that is why, I mean, we're even having this session today. um, I can talk about a few applications like audio mein. I've personally worked with these applications with some of the larger companies in the world as well. Audio synthesis, जैसे आज के कुछ सेशंस में आपने इनके मॉडल्स के या आर्किटेक्चर्स देखे होंगे, and I've made it a point to include Hugging Face everywhere, and I'll tell you why I do that as well. Audio synthesis may you're using text to speech, speech to text, and text to video. You've seen some of this as well. Voice cloning, cloning के भी बहुत सारे use cases आ जाते हैं. And I'm gonna come back to the industry part as well. Speech separation, I've done it like, I don't know, 2 years ago, and now it's becoming more efficient. जहाँ पर अगर 6 लोग बात कर रहे हैं एक ही conversation के अंदर, तो you would have 6 के 6 लोगों की आवाज़ें अलग होके 6 ऑडियो ट्रैक्स बन जाएंगे, so everyone can hear everyone correct very clearly and correctly. And some of the bigger companies are working on it. Noise removal. There's companies that I'm going to talk about. They're working actively with noise removal. One of them is Crisp.ai, and the other one would be Facebook. You'd be surprised. And audio enhancements, music generation, speaker diarization, and so on. Now, a lot of it these days is actually attributed to generational AI, generative audio, because या तो generative audio हो जाएगी या generative text भी हो जाता है, but it kind of generative models वहाँ पे use होते हैं, so it becomes a part of generative audio like by default. So with these applications and many more coming to the world, like that you'll be looking at in the years to come, I believe that this chaos has a method, and the method is, there are certain architectures of models that are basically just very more famous than the others. ये जो adoption आई है, you've seen some of these models already today, so I'm not gonna bore you with the details, but at the same time, it's important to know diffusion based models, generative adversarial network, GAN based models, and transformers. They've changed everything, right? Now, ये तीन architectures, in my view, are the main, and then जो एक forward growth of the AI adoption को drive कर रहे हैं, but there would be many others. I mean, I don't want to discredit any of the great research activities that are going on in the rest of the world, but with these models at the foundation, and these models, the replicability of these models, for example, the scale of these models, for example, यहाँ पर अगर आप एक transformer देख रहे हैं, तो it's not just one transformer. You could just replicate either the encoder layers or the decoder layers in here to, let's say, create a million parameter model. A million parameter is like, for layman's, it's like, छोटा सा दिमाग की तरह, right? I mean, million neurons होंगे, right? And then you have, if you want to have it understand more things, you just scale it to 100 million parameter model, to 100 billion parameter model, to GPT-3 ka 175 billion parameter model, to now we're talking about trillion parameter model. So this is a scalability that's kind of making all of these generational activities really possible with AI, and particularly with audio. And I'll tell you, audio is specifically a more difficult domain when it comes to generation, because audio के अंदर you're creating that sound wave which is much more rich than an English word, right? So English word में it becomes relatively easier to predict, but obviously the context becomes very much more difficult as well. But with audio, when you're creating that generational wave, that becomes relatively, for the algorithms, it becomes much more difficult to create, at least as yet. And that's why the AI is, the research to community है ना, वो अभी तक they're trying to find that general model जो इस तरह से स्केल कर सके, जिस तरह से ट्रांसफॉर्मर्स और गैन्स और डिफ्यूजन मॉडल्स ने भी किया है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मर्स ने, जिसमें हम जीपीटीज, जनरल पर्पस ट्रांसफॉर्मर्स, इनको हम आजकल बहुत जानते हैं.
But yeah, coming back to it, your future of with AI is not looking like this for sure. So I'm going to come back to the point where it says future of AI in Islamabad will still look like this. It will not be spaceships flying around. Maybe in the 50 years, yes, that's a different technology, but that's not going to be maybe like उसमें AI का इतना बड़ा हाथ नहीं होगा. Maybe robotics will be a little bit more kind of involved with that kind of thing. But no, we're not looking at that. Coming back to it, see, this is one of these models that we kind of helped create, and this includes we've tried to include that voice-based command model. Now, this is like generational model, really, but imagine करें एक artist की जिंदगी without this, and you've seen the demos like Mid Journey वगैरह के थोड़ी देर पहले, right? Just imagine कि everything is becoming command oriented. For example, uh, it's been it's very hard for anybody who's using an automated world to imagine कि यार मेरे पास अगर गूगल होम नहीं लगा हुआ होगा तो मैं अलार्म कैसे सेट करूंगा. तो सही कैसे करूंगा मुझे वाकई पता नहीं है, राइट? आई स्पीक टू गूगल सेइंग कि यार मुझे सेट एन अलार्म फॉर टुमारो 9 a.m. in the morning. I don't have a mobile phone. It's just easier, right? So if you get used to this thing, artists get used to this thing, it becomes very difficult for anybody or everybody to really work without them. Imagine the calculator wala example. I mean, it's very difficult for you to go back to Photoshop unless Photoshop kind of, जिस तरह से वो evolve कर रहे हैं वो करते रहें. And going back to Photoshop और एक एक layer के साथ जिस तरह से आप काम कर रहे हो, if you can talk to those layers, it's just much more easier, right? That way. And these are proprietary images, but वो हमने उनका MIT license कर दिया हुआ है, so you can feel free to use them. I can share them with you. But coming back to the demo part, I would just say before the demo, there are tons and tons of models available. ये आपके लिए मैंने particularly generative AI से particularly जो generative AI use कर रहे थे, but in some ways some are not as well. But वो models मैंने एक list compile की हुई है अपनी team के साथ that you can visit, and these are the models that you can sign up to today. Like in सबके trial versions हैं. If you want to get into AI and get an understanding, there's no amount of time. For example, आज की session में I'm allocated about 15 to 20 minutes, right? And while looking at the time, it's already like halfway through or maybe उससे भी ज़्यादा. So I cannot talk about all of these applications, but what I can tell you is the future. Imagine this. If you were to invest your time in a calculator, if you're an investor and if you were to invest your time in creating the next calculator 100 years ago, जब भी calculator आया था, wouldn't that be a great use of your time? I'm sure it would. Of 100 years, 50, 80 years, whatever the time be, maybe. But the point being, in a very similar way, because everyone used calculator after that. आज AI बन रही है, and the point of the point that I was trying to make earlier was AI के tools के अलावा आगे की दुनिया मुश्किल होती जाएगी. You will just be considered inefficient, and it will not help you as a student, as a professional, as an entrepreneur. They're not going to help you if you're not aware of this AI. So use these tools in your life. I've used some of them, and I've personally worked with these companies, helping them create these solutions. Some of these companies, and so it could range from royalty-free music that elevates your story to studio quality recordings right from your computer to voice generator and or to a cloning agent. And these are real companies that are making profits. They're making millions of dollars in terms of sales. Some in some cases, and just look at them and you will get an idea of what I want to convey today beyond the demo that I have for you today. And it's going to impact not only fancy, they're not only fancy words, they're impacting the industries such as, and I've written some of them here as well. For example, advertisement industry. I saw this product the other day जहाँ पर you have a product, वो होता है ना आपके पास एक medicine की वो you have an amoxil and you're someone जिसको वो amoxil sell करनी है, जैसे डॉक्टर्स के पास वो medical reps आते हैं. But in a very similar way, I mean, in some other parts of the world, हर product जो आप बनाते हैं, from an HR management tool to
to anything really, an ERP to a very small product that can help you, maybe a phone or something. उसके अंदर ना sales becomes a very crucial element. और वो जो sales जो अच्छी कर लेता है, वो बंदा सिर्फ अपने अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा रहा था बाय अर्निंग दैट कमीशन, बट वो उस कंपनी को भी फायदा दे रहा होता है और उस कस्टमर को भी फायदा दे रहा होता है जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए होती है, पर उसको पता नहीं होता कि उसके चाहिए. So sales के अंदर I saw this product जिसमें you can have one video. For example, मैं अभी एक video record कर रहा हूँ and I could say that, hi, thank you very much. My name is SNAI and I work with Echo, SNAI, sorry, SN, and I work with Echo AI and blah, and सारी आपने record कर दी. And एक video editing tool जिसमें hi के बाद मैंने एक add कर दिया, hi Misam, how are you doing? Good morning. And then बाकी सारी video. So that video becomes much more valuable than a generic video, right? In a very similar way, अब मेरे पास अगर 5,000 emails की list है and उनके साथ नामों की list है, now if I use that tool to generate my sales videos, या जो भी sales person है उसकी videos, that has much more of an impact on somebody. And now imagine अगर मैं वो tool अपनी कंपनी में इस्तेमाल ना करवाऊं और कोई और कर रहा हो use, I mean, I'm not going to sell my product. It's like as fast or as efficiently as somebody else does. In a very similar way, and this is the sales job. हमारे पास पाकिस्तान में सबसे बड़े call centers पाकिस्तान में दुनिया के बड़े call centers में से TRG being one of them. Music generation becomes very difficult without AI, and I'm for professionals, I'm talking about careers. Music industry के अंदर, without using these tools, you're not going to probably flourish or something. But yeah, with all of that, coming back to the demo part, I have one for you in here. So what this does is, मेरे पास एक YouTube video. You can still see my screen there. Oh, who I don't know who doesn't know this guy. I mean, at least very few people I've met don't know, would say that they don't know him. It's a pretty old video, MKBHD. Marcus Brownlee. Now उसकी पुरानी एक video मैंने उठा दी हुई है, so there's no controversy here as well. And what I'm gonna do is I'm gonna download this video. This is a tool जो हमने ऐसे please zoom कर दीजिएगा. I'm sorry. थोड़ा zoom कर दीजिएगा. Yeah. Oh, it's just a basic interface. ये हमने मैं चाह रहा था कि हमारे मेरी कंपनी से कुछ very bright minds had this idea कि we should give them a demo of a tool that doesn't exist otherwise directly, right? I mean, कुछ exist करता हो, बस में Echo का जो है ना एक tinge होना चाहिए. So we're like, okay, sure. And they came up with this idea जहाँ पर ये YouTube video है, we download ये हमने इस तरह से इसको बनाया हुआ था कि download the video, and then it generates the transcript of this video. Again, we're using AI, right? I mean, just imagine AI का एक है technical side जहाँ मैं I can talk about architectures and stable diffusion and all, which is great, but this is the application part जो मैं चाह रहा हूँ कि from a layman perspective भी आपको नजर आए. This is the transcript, right? Again, we used in AI. बात से मुझे याद आ गया, अब मुझे मॉडल याद आया जो मैंने OpenAI Whisper के नाम से था. Exactly, and you know what? I was about to talk about it just now. There are 20 different models AI के जो हम यहाँ पर मैंने दिखाए थे, जो not 20 but let's say speech to text वाले models होंगे यहाँ पर, synthesia, synthesis और वो तो synthesis करते हैं. There'll be others as well. Let me check. So speech allo करता है, Otter जो है speech to text करता है. There are like these models, and aside from that, OpenAI वालों ने अभी recently एक model launch किया है. It's called Whisper, and that's based on again similar architectures. मैंने आपको बताया they are the baseline architectures now. एक race लगी हुई थी कुछ वक्त पहले कि best architecture हमने define करना है. 2017 में वसवानी के paper ने उस रेस को चैंपियन कर दिया. उसने कहा no, transformer is the way to go, right? Attention is all you need. A lot of the AI professionals would know कि वो उस पेपर ने दुनिया चेंज कर दी. इससे पहले 2013 में जनरेटिव मॉडल्स ने दुनिया चेंज कर दी थी. So there are like some baseline models जो यूज हो रहे हैं, and this particular speech to text is converted by a model called Whisper, which is coming in from OpenAI. Again, and this model can transcription कहते हैं speech to text को in over 100 languages. I mean,
I could be saying अभी मेरी जो ज़बान है जो मैं language बोल रहा हूँ, it's a mix of English and Urdu, right? Now this model can transcribe English and Urdu का दोनों का, and then it gets context as well कि वो क्या बोल रहा हूँ मैं. You know, just imagine आज तक और कौन सा AI model है जिसमें मैं ये लिखना शुरू करूँ, what's up guys, और मैं आपको बताता हूँ, और वो सही तरह ट्रांसक्राइब करे, और ये भी उसको पता हो कि और मैं आपको बताता हूँ का मतलब एंड आई एम गोइंग टू टेल यू. इट एक्चुअली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एज वेल. लाइक अगर इसको आप पाइपलाइन को आप ओपन एआई के किसी जीपीटी मॉडल वगैरह के साथ कंबाइन करें तो, एंड दैट्स व्हाट वी डिड हियर. ट्रांसक्राइब करके इसके वो ट्रांसक्रिप्शन के जो पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स के कहाँ से कहाँ तक किसने क्या बोला था वो देख के स्पीकर डायराइजेशन का भी यहाँ पर एक एलिमेंट आ सकता है. डायराइजेशन का मतलब कि इफ देयर आर लाइक 3 स्पीकर्स टॉकिंग टू ईच टॉकिंग, तो ये उनको भी सेपरेट कर लेगा, like one person from the other. And then we created a chatbot out of it. So the idea is, in this video, what he talks about is this camcorder के का एक वीडियो है, उसके बारे में उसके फीचर्स बताता है, Windows 7 के बारे में बताता है. This is like pretty old video. I just did it by purpose ताकि आजकल की recent videos में ना उसको ज़्यादा views मिलते हैं तो it becomes controversial for me. So Windows Vista की बात करते हैं and all that. Now I can talk to it. Again, another generative model. What is the main idea of the conversation? It give me an answer about it. Conversation market is testing out new Sanyoki camcorder, a new camera angle. I could say, is there something in this which would interest a medical student? I'm just going on the fly. मैंने इसको prepare नहीं किया था. Right? Who is the intended audience? Well, viewers. I think it could be more specific. Transcription or tools. Again, we're talking about generative, and I'm kind of combining all the AI वाले elements with non-AI elements. I'm going to talk to you about another music generation model as well. मैं इसकी summary, headlines वगैरह सारी generate कर सकता हूँ. So imagine मैं अपनी videos देखने के बजाय I can generate 3 headlines देख लेते हैं कि what is it talking about. अगर वो headline समझ आती है तो we can just dive into the video a bit more. अगर आपके पास इस तरह से 50-60 मिनट की वीडियो है एंड यू डोंट वांट टू वॉच दैट, तो अक्सर आजकल क्या करते हैं हम, we're like forward काम आती है, नहीं forward नहीं अच्छी है. इमेजिन YouTube ने ये फीचर देना शुरू कर दिया. और I see फ्यूचर यही है कि YouTube जो है वो सेशन इस तरह के अपॉर्चुनिटीज दे देगा कि आप वीडियो के ऊपर फिल्टर लगा लें. Yeah, but I want to touch on a different point in here as well, Misam, which is जब YouTube देगा, it might be, well, it is already too late for that, but ये जो टेक्नोलॉजी है ये एग्जिस्ट करती है 2 साल से. Imagine करें if 2 years ago a company would have created this system, and by the way it was easy, a lot of companies were working with these systems, और उस वक्त वो ये वाला फीचर ऑन वो कर लेते, इसको मार्केट में लॉन्च कर देते एंड उसके 1-2 पेटेंट्स हो जाते. YouTube would have come to you with an offer saying, get this money, give me that technology, and you would have been partying at home, you know, with that exit. इसको हम कहते हैं कंपनी ने एग्जिट कर दिया. करीम क्यों आई थी मार्केट के अंदर? करीम, आई मीन उबर वाज द क्लियर विनर, राइट? करीम से काफी पहले आ गई थी, लेकिन वो इस दुनिया के हिस्से में करीम वाज, उबर इतनी प्रेवलेंट नहीं थी, एंड करीम वाज सोल्ड टू उबर फॉर $2.2 billion. Even though it was the replicate idea, was a new idea 2 years ago. And what I'm saying is that if you want to stay ahead of the curve, start thinking about the future. And future में audio की applications, or I'm a very visual and an applications oriented guy. I would say future में audio की applications कहाँ आ रही हैं और उसका किस तरह से jobs पे impact पड़ रहा है. And I would want to mention jobs in here because AI is a tool. It's there to make people more efficient, right? Calculator के आने से इंसान
उन्होंने जॉब्स लूज नहीं की थी, कुछ लोगों ने की होंगी बिकॉज 10 लोगों की जगह पे 5 लोगों का काम था, यस, बट जो ज्यादा एफिशिएंट थे उनका काम था ना, दे वर पेइंग फॉर दोज devices and now we'll be paying for AI tools. Now imagine 5 साल के बाद दुनिया कहाँ होगी ऑडियो AI की, and we're talking about speech generation, we're talking about intelligent search, everything speech की transcription, voice cloning. 5 साल के बाद दुनिया का होगी. Start building those applications today, sell them to bigger companies. I mean, you don't have to kind of take the baton for the entire life or retirement उस company के साथ करनी है. Just exit कर लें, right? So that was the point that I wanted to bring into this conversation, although I feel that it might be a bit tangential to what I'm supposed to talk about as well. But I just really wanted ये out हो बात. Now, in a very similar way, this is somebody else's work. We wanted to clone it, but again, we thought if there's no point in reinventing the wheel. I'm gonna tell you, I'm gonna show you how real-time music generation can help artists create that, क्या कहते हैं उससे, वो vibe, really, right? Artists अपनी धुन में रहना चाहते हैं to create that awesome music, right? And they artist कहते हैं ना, artist दिमाग है इसका. Usually autistic लोगों को artist कहते हैं sometimes, but they want to be in a zone to create music. Why do they need to be in a zone? Because they want to be creative. क्रिएटिव के लिए एक सर्टन फोकस चाहिए होता है, सर्टन आइडियाज चाहिए होते हैं, वो आइडियाज नॉन कन्वेंशनल होते हैं. नाउ इन हियर द म्यूजिकल प्रॉम्प्ट इज अ कैट diva singing in a New York jazz club. It's just insane, right? I mean, I'm going to use a different word. Beatles music with in jazz form. हम इसकी ड्यूरेशन इन सेकंड्स 8 सेकंड रख देते हैं. इमेजिन यू आर एन आर्टिस्ट, यू नो, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन दोस आर्टिस्ट शूज, जहां यू आर राइटर्स के लिए एक होता है राइटर्स ब्लॉक, व्हेन यू आर लाइक यू वांट टू क्रिएट, यू वांट टू राइट समथिंग बट यू कांट कम अप विद इनफ आइडियाज. इसी तरह से आपने आज बहुत सारे मिड जर्नी के केसेस देखे, एंड देन यू नो यू आर नॉट गोना गेट इनटू एन आर्टिस्ट ब्लॉक in that terms now. In a very similar way, जब आपने music create करना, you need some inspirations, and for inspirations, people travel the world. People talk to other people, उनको happiness और emotion की full range खुद बहुत deeply experience करनी होती है to get into that zone. I imagine that वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं with that thing. You create these this kind of music like in seconds, like this. It uses the tunes from जो Beatles अपने use करते हैं, and then it adds a bit of a jazz touch to it. And if you want, rule it. I think ऐसा इसकी आवाज नहीं है. All right. Let me see if there's. It might be the. I guess जब आप स्क्रीन रीशेयर करें, एक दफा स्टॉप करके शेयर करें, और जब वो प्रॉम्प्ट देगा ना आपको, तो वहां पे आएगा पास सिस्टम ऑडियो. Yeah, sure. So I'm gonna present share screen, entire screen पे मैं share करता हूँ and it starts sharing. Okay, वहां पे कोई चेक बॉक्स नहीं आ रहा आपके पास, पास सिस्टम ऑडियो या ऐसा कुछ? Nothing, but एक बार देख लेते हैं. Is it coming through? So जब मैं शेयर स्क्रीन दबाता हूँ ना, तो मेरे सामने क्रोम की एक पॉपअप आती है जिसमें एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है. लेफ्ट पे शेयर सिस्टम ऑडियो का चेक बॉक्स है. मैं वो देख रहा था. I think I might have missed out on that one particularly. Hold on. ये नहीं, prompt तो नहीं दे रहा. Maybe it's हाँ, share tab audio है. मैं ये tab share कर देता हूँ. It might be easier. Share tab audio, वो शायद वो security वगैरह की वजह से कुछ मसला हो रहा होगा. Oh yes, right. Now audio is enabled. Okay, perfect. So I've just shared the tab now. वो शायद उसमें computer का allow ना कर रहा हूँ. So it generated some audio. You can hear this, right? Yes. So it's adding a little bit of a Beatles touch to it with the jazz form. If I want some hip hop and some hip hop, it will generate a little bit of a hip hop into it. और मैं blues हटा देता हूँ, negative prompts देता हूँ. So what happens is ये उस तरह का म्यूजिक जनरेट करना जानता है जो आप शायद इमेजिन कर रहे हैं. And it's a very powerful thing to imagine and just
I'm going to give you a few startup ideas right here, right? I think Zulfikar Start- Jabbar Khan is going to love it from the Coke studio. absolutely. You see, uh, there's a hype up दे दिया इसने. So what I'm और blues जो बिल्कुल जो deep हैं उनको से minimize कर दिया. Zulfikar Jabbar is gonna love this. Yes, anybody I'm sure would love it. I mean, who would not? Unless you're paying too much for it. Obviously, there's a certain price to it, right? जो आपने price tag को manage करना होता है. What I'm saying is this podcasters or musicians will not be creating these tools. It will be the technology guys who will be creating these tools. And they'll be creating these tools for that market, for that user base. And so the ये जो बोझ है ये हम जैसों पे है जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं to enable the rest of the world, advertisers, to enable advertisers, to enable musicians, to enable a film industry, for example, to enable call center की industry, healthcare में you can identify. I already saw there was a paper from Nature published in Nature. It's one of the most reputed journals in the world. कि आपके breathing pattern से आपके heart disease का chance identify कर देता है. That paper was in 2019. 4 years ago that I read that paper. कि वो breathing patterns के साथ आपको आपके मोबाइल फोन से वो हर वक्त जो है सुनता रहता है आपकी आपकी हल्की सी breathing and उससे आपको बता देता है सुबह के टाइम पे कि this guy has a chance of a heart attack in the next, I don't know, 4 days or something. So these kinds of medical applications, education के अंदर, we're working with a company जो जो आपकी यूडेमी की तरह की वीडियोस जो बनी हुई होती हैं उन वीडियोस के को जनरेट करने के लिए they are using AI to generate the content to create those headlines जैसे मैंने आपको दिखाई थी and then they are using सिंथीसिया की तरह का एक मैकेनिज्म प्रोप्राइटरी जिससे वो पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर रहे हैं. इमेजिन आपका प्रोसेस कितना एफिशिएंट हो जाता है ना. इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी, राइट? सो इफ यू कैन क्रिएट मोर कोर्सेज एंड क्वालिटी पे अगर आप फोकस करो ऑफ द कंटेंट, that becomes much more helpful to the students in some cases, or video cloning or audio cloning, and it's all generative audio that we're talking about here, and generative videos and generative everything really. So with that in place, I would say, let me share my screen again so that I can just close it off because I feel that I'm uh, cruelly over time. I hope it's not too boring. But so this brings us to coming back to the fact we've been working with some of the awesome players out there, and we're very lucky to have been working with some of the interesting big giants जो अभी इस एजुकेशन या लीगल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल लॉयर्स वगैरह उसके अंदर बहुत अपना नाम बना चुके हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी और इसके साथ. So with that in mind, I believe that's pretty much it about the demo part. I wanted to just talk about one little thing before really moving past this, which was the world in the next 2 to 3 years is gonna feel the within a seismic activity when it comes to technology. Or उस seismic activity में it's right now or maybe 2 years earlier, but even right now is the time when you can jump on that bandwagon, right? I mean, that bandwagon is actually a good one this time for a change. तो उस पे if you are looking towards contributing to the changing world, I'd encourage you to go through applications, as many as you can, and then look into architectures and applications and start implementing them, changing them, and then implementing them. Have a good audience. Generative audio ke andar, here. Have a good audience. Know who you are building this for, and unlock करें लोगों की efficiency को. NVIDIA is a big player. NVIDIA के साथ we are working with them
in a program, or they're working with such cutting edge stuff. मेरी live video जो आ रही है, मेरी आंखें नीचे देख रही हैं. It's very simple, right? I mean, I'm looking at the text. I'm not looking at the camera right here. That वो live video से आंखों को ऊपर की तरफ move कर देता है. Now that's a technology that I'd happily pay $2 a month for. अगर मुझे मेरे browser में वो आ जाती है. NVIDIA is working on it, yeah, sure, but a lot of other people started working on it like before they did, and they got acquired by NVIDIA to be working with this. NVIDIA is also working with, and we actually have demos with them, जिनमें मेरी आवाज के पीछे कोई भी background noise आ जाता है, तो वो automatically clean हो जाता है, very much like what Crisp AI is doing. Crisp AI is like a $4 or $5 subscription या something like that, जिसमें आपकी echo वगैरह सारी cancel करके it feels as if you're in a studio, although आपके पास एक जो आपका लैपटॉप का मोबाइल वो माइक्रोफोन है वो पुराना हो गया, वो तब भी वो आपकी ना crisp audio आती है. And these guys are working. I've known them for about 4 years now, so they're working way before that. They've been in the market for way before that. So yeah, I hope I didn't. I made this session interesting and application oriented, and that's it from me. Really, Misam, I think that will be over to you. Oh, by the way, we have a presence in Lahore and US, so just feel free to contact me anywhere. थैंक यू सो मच एहसन फॉर योर वैल्यूबल टाइम. और मैं यहाँ पे ऑडियंस में जो लोग रह गए हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरा सेशन जो है वो हमारा अटेंड किया, और जितनी एफर्ट्स हमने डाली है उतना ही ऑडियंस ने भी सुनने में डाली है. तो यहाँ पर मैं रैप करने के लिए जो है वो सेशन को मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको फाइनली आखिरी जो चीज़ें हैं वो नज़र आ जाएं. लेकिन आई होप सो कि ये थोड़ा सा एक लंबा सेशन रहा होगा, लेकिन आपको काफ़ी हद तक नई चीज़ें सीखने मिली होंगी जो कि जेनरेटिव एआई के बारे से हो रही हैं. नेक्स्ट फ्रंटियर जो है वो कोड असिस्ट का है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं. हमने पिछला सेशन एक्सटेंसिवली कवर किया है, तो आप हमारा पिछला सेशन जो है वो प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें एआई जो है वो कोड जनरेशन कर रही है, कोड कंप्लीशन कर रही है, कोड रिव्यू कर रही है. तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि कोड जनरेशन के हवाले से काम कर रहे हैं. वन ऑफ द क्विक थिंग दैट आई वांटेड टू शो इज द सेल्फ हीलिंग पाइपलाइन. मतलब ये कि पहले आप कोड लिखा करते थे, उसमें एरर आ जाता था. आपके जब CI/CD पाइपलाइंस जब आपके कोड को कंपाइल करती थी तो वहां पे आपको एरर खुद जाके फिक्स करना पड़ता था. लेकिन अब वो एरर चैट जीपीटी फिक्स करेगा और दोबारा से पाइपलाइन ट्रिगर कर देगा. हियर इज अ क्विक डेमो. This is a quick demo of how you can use LangChain and OpenAI to auto self-heal your code repositories. So I have a demo Express application here, and as you can see, it throws errors because I forgot to import the necessary imports such as Express and the required typings for the app to run. So if I now go ahead and commit that, sorry, I commit that error and I push that error. What we're seeing is I have an OpenPR going on here, and that triggers an action. So you can see now, since I committed, it runs my action and it runs a build command. As we know, the build command will fail, and what happens after that, when the build command has failed, the error log from that build command is passed on to another job that then runs LangChain and OpenAI in order to fix the error. So now you can see that build has failed because it couldn't find the imports that it didn't add. As a next step, it automatically launches the other workflow. So if I go into that other workflow, you can see once it's installed the dependencies, it's installing OpenAI, LangChain, and all the other dependencies required. And then it analyzes your code. And the error to find out what has caused the error, which file has caused the error. It fixes the file. It writes the file. And then it pushes it again. Exactly this has happened now. So you can now see if I go into my code, you can now see it says these are the errors. It found the file name. It created a JSON structured output for the fix, and it committed its changes. So now if I go to my error branch, so I can go here to my error branch, and if I go to the file, you can now see it has added the required imports and my file is now fixed. And this is how you create self-healing CI/CD pipelines using GitHub Actions, LangChain, and OpenAI. So I hope so कि आपने ये डेमो देख लिया होगा. एंड फाइनल एरिया वो आ रहा है जहाँ पर 3D मॉडलिंग और 3D इन्वायरमेंट डिज़ाइन, जिसपे ग्रुप में काफ़ी हलचल मची थी कि हमें उस टूल का नाम बता दें कि ये कौन कैसे काम कर रहा है. तो उसका यहाँ पर डेमो मौजूद है.
इस डेमो के अंदर आप देख सकते हैं कि वो एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिख रहा है जिसने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे कुछ दरख्त चाहिए इसके अंदर, रेस्ट कवर्ड बाय द लश ग्रीन ग्रास और बोल्ड फ्लावर्स, तो ये इन्वायरमेंट बन गया। इसने कुछ प्रॉम्प्ट में करेक्शंस कर दी हैं, स्नो डाल दिया है। अब ये फायदा है कि आप जो टेक्स्ट के अंदर इंस्पिरेशन को फौरन चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब ये नहीं कर सकते आप किसी ह्यूमन को आप बोले इन्वायरमेंट बना दे, फिर वो आपको भेज दे, फिर आप उसको बोले इसमें ये 4 चेंजेस कर दें। तो यही वो चीज़ है जो कि सेल्फ सर्विस, अगर आपने बिजनेस इंटेलिजेंस समझा था ना, तो दिस इज द सेल्फ सर्विस टाइम ऑफ डूइंग एवरीथिंग सेल्फ सर्विस। जस्ट गेट द प्रॉम्प्ट इन योर हैंड एंड स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग एट योर एंड। अब यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से एक कमाल का पूरा इन्वायरमेंट बना लेता है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि फ्यूचर ऑफ गेम्स और 3D मॉडलिंग और आर्किटेक्ट्स के लिए जो VR वगैरह है वो सब तब्दील होने वाला है। मतलब वो क्लाइंट को बातें बताते बताते जो है ना वो चीज़ों का रियल मॉडल कंस्ट्रक्ट कर देंगे और दिखा सकते हैं कि सर आपका मॉडल ऐसे है। आई थिंक कस्टमर्स वुड बी अबाउट एज वेल। ये टेक्नोलॉजी इस वक्त प्रीव्यू में, और इसका स्टार्टअप मैंने ग्रुप पे मेंशन किया हुआ था, तो आप फेसबुक के कराची AI के ग्रुप पे जा सकते हैं और इस स्टार्टअप के लिंक को देख सकते हैं। अब ये काफ़ी लंबा प्रॉम्प्ट लिखता है। यहाँ पर अगर यहाँ पे कॉपी कर दूँ, अब आपको ये स्ट्रीट के दिख रहा होगा और यहाँ पर स्ट्रीट की लाइटिंग्स बना रहा है, वहाँ पे सब चीज़ें कर रहा है, दरख्त लगा दिए इसने और इसमें बंदा भी इसने चला के दिखा दिया। सो दिस इज द वन ऑफ द फ्यू क्विक फ्यूचर्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ये एक और स्टार्टअप है रॉब्लॉक्स के नाम से। सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल वे फॉरवर्ड। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स अब आपको दिखेंगे जो कि जनरेटिव AI पे काम कर रहे हैं। जनरेटिव नॉर्मल मॉडल्स हैं, इसके अलावा कॉपी राइटिंग के हैं, ऑडियो जनरेशन है, B2B है, इमेज जनरेशन है, वीडियो स्पीच जनरेशन है, बहुत सारे और टेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स हैं, कोड जनरेशन है। गेमिंग के अंदर बहुत सारी डिसरप्शन आने वाली है, वीडियो में आने वाली है। तो दुनिया बदलने वाली है। 2022 और 23 वुड बी द लैंडमार्क, एंड 2024 में ना समझे कि दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है ना वो धमाके हो जाएंगे AI के। सो दिस इज द टाइम नाउ। आपको AI सीखनी चाहिए, AI के जरिए, टूल्स के जरिए काम करना आना चाहिए। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, जस्ट दिस इज अ बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। अगर आप टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं तो लर्न डेवलपमेंट, हाउ यू कैन गेट इनटू द कोड एंड डेवलप एप्लीकेशंस विद AI, and you're gonna be the next millionaire or billionaire soon. So I hope so कि कम्युनिटी को ये हमारा पूरा मीटअप पसंद आया होगा और हमारी ये जो रमज़ान के दरमियान स्किल्स कीपिंग मीट जो हमारी एफर्ट्स हैं वो पसंद आई होंगी। और कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं या आपका कोई कमेंट या फीडबैक है इवेंट के बारे से, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। Karachi.ti.com हमारी वेबसाइट है और हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे भी ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड लास्ट के अंदर हमारे एडमिशन्स मौजूद हैं जो कि स्टार्ट होने मई के अंदर। आई एम गिविंग अ क्विक ग्लिम्स इनटू इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू वन ऑफ आवर कोर्सेज। दिस इज मी समझा ईमानी साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज सेशन के बारे में ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।